Okay, so is the screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Okay, so last class we had discussed about earthquake as well as I guess cyclone, right? हमर सेठी सुनामी और वोल्केनोटा बाकी थिला. So first we will be cyclone ता आगुरु डिस्कस हेतला, earthquake last class हम डिस्कस करथिले. तो फर्स्ट सुनामी हम डिस्कस करिया, तापरे वोल्केनिज्म डिस्कस करिया. ठीक अछि. Then we will be completing our Indian geography for the mains, right? So can you tell me what is tsunami? Anyone? Sir, these are large waves originated due to the earthquake in the ocean surface. Okay, very good. So tsunami generally means harbor waves. Su in Japanese word is known as this is a means tsunami in itself is a Japanese word. So su in Japanese word means harbor and nami means waves. So it is known as harbor waves. But these waves are not those general waves that we see. जे पूरी जाइथिबे देखिथिबे एटा से वेव नुहे, but these are unusual waves of great height. The height may go up to 30 meters. 100 फुट पाखापाखि जाए पानी उठी जाए पारे, वेव आसी पारे इन अ सुनामी. सो आप मु अर्थक्वेक आमे डिस्कस करथिले आ जे जो माने अर्थक्वेक भलो से बुझिथिबे एटा किछि बेसी प्रॉब्लम होबनी. ठीक अछि. So tsunami, as it is written here, what is it? It is nothing but unusual waves that originates from the earthquake. So let's just see what happens in tsunami. Tsunami re kon हुए? Generally, let's say this is your oceanic surface, and this is, let's say, your land surface. Okay. तो सुनामी रे कोन हुए? हमें अर्थक्वेक जानी छे कि अर्थक्वेक जो ओरिजिनेट हुए ताको कोन कोनती? एपिसेंटर कोनती? Hypocenter. हाइपोसेंटर, राइट. सो हमरो जेतले सुनामी हमें जानी छे कि अर्थक्वेक जो ओरिजिनेट हुए सेटा हाइपोसेंटर कोनती. तो हमरो सुनामी रे हाइपोसेंटर ता जनरली कोठी थाए? जनरली कोड था जनरली ओसनिक बेड रे. ओके, ओसनिक बेड रे हमरो हाइपोसेंटर थाए. सो जेतले गोटे अर्थक्वेक हमरो ओसनिक बेड रे जेतले ओरिजिन थाए दारो सेतले कोन होबो? आ ओसनिक बेड रे काहे की ओरिजिन है? ओसनिक बेड रे नॉर्मली ओसनिक बेड रे हमरो कोन होबो? जोठी हमरो लेट्स से कन्वर्जेंट बाउंड्री अछि. ओके, जोठी जनरली हमरो कन्वर्जेंट बाउंड्री अछि सेठी कोन होबो? जोठी कन्वर्जेंट बाउंड्री अछि सेठी हमरो अर्थक्वेक जेतबेले गोटे लेट्स से दिस इज अ प्लेट, this is another plate. Okay, let's say there are two plates, and this plate, let's say this is plate A, this is plate B, and the plate A is subducting under plate B, right? Plate B A is subducting under plate B. जेतबेले ये subduct करिवो सेतबेले कोन होबो? ए जो B प्लेट टा को भी ये कोन करिवो? टिके B प्लेट टा भी टिके राइज करजिवो, राइट? जो टिके राइज करिवो, if you think it in a continental or a plate बेसिस, माने जदि गोटे कॉन्टिनेंटल कॉन्टेक्स्ट रे तमे सेटा देखिबो, से जो टिके राइज टा एक्चुअली यदि कॉन्टिनेंटल कॉन्टेक्स्ट रे बहुत अधिक आइथिबो, त माने जो टिके राइज होबो एठी कोन होबो? एठी जो पानी थिबो, ओसनिक वाटर जो थिबो, लेट्स से वी हैव ओसनिक वाटर हियर. ओके, पानी अछि आ एठी एमति गोटे प्लेट सबडक्ट करछि आ एटा आ गोटे प्लेट. जेतले एटा एठी सबडक्ट करिवो, एटा को कोन करिवो? टिके से ऊपर को उठै दबो. एटा टिके अपहेविल हबो, टिके ऊपर को उठै दबो. जे टिके ऊपर को उठै दबो कोन हबो? एठी जो पानी थिबो एटा टिके हमकु लागु जे टिके, किंतु कॉन्टिनेंटल कॉन्टेक्स्ट रे बहुत अधिका थिबो. तो एठी से कोन करिवो? वाटर मास को कोन करिवो?
ऊपर को उठे दबो, राइट। ये कौन करो वाटर मास को ऊपर को उठे दबो। आउ एठु जो एनर्जी टा रिलीज हो, ये जो एनर्जी टा रिलीज हो सी कौन करिवो, ये जो वाटर मास टा राइज करिवो, ये जो वेव टा राइज करिवो, से वेव को बहुत फास्ट से कौन करिवो कोस्ट आड़ को नेकी जीवो। एठी जो पानी टा ऊपर को उठिला, ए प्लेट टा सबडक्ट होबारु से पानी को एठी जो एनर्जी राइज करिवो, एठी गोटे वेव भलिया उठिवो। एठी जो एनर्जी टा हमरो जनरेट हो से एनर्जी कौन करिवो बहुत फास्ट ई पानी को वेव को नेकी जीवो टुवर्ड्स द कोस्ट, वेव को नेकी जीवो टुवर्ड्स द कोस्ट। तो एठी कोन हुए जेतले डीप ओशन रे थाउ, जेतले डीप ओशन रे थाउ, लेट्स से दिस इज अ डीप ओशन, ओके। लेट्स से दिस इज अ डीप ओशन, आ हमर एठी वाटर मास टा उठिला तळु उठिला। डीप ओशन थाउ हमर जेतले वेव्स मूव करे, आपण माने जतो वेव्स पढिथि आपण जानिथि वेव्स केमति मूव करे इन एन एलिप्टिकल मैनर। वेव्स केमति मूव करे इन एन एलिप्टिकल मैनर, माने समथिंग लाइक दिस, ठीक अछि, समथिंग लाइक दिस। तो ई वेव टा कोन होबो मूव करथि एलिप्टिकल मैनर रे। जेतले एलिप्टिकल मैनर रे मूव करूची जेतले कोन होची एठी देखंतु, जेतले धीरे धीरे आमे कोस्ट आड़ को जीवा, जेतले धीरे धीरे आमे कोस्ट आड़ को जीवा, तो कोन होबो हमरो ए जो डेप्थ, ए डेप्थ टा कमी कमी जीवो। लेट्स से दिस इज योर वाटर, आमे जेतले कोस्ट आड़ को जीवा ए जो डेप्थ टा हमर कोन होबो कमी कमी जीवो। तो एठी कोन होची जेतले एलिप्टिकली मूव करूची, जेतले वाटर वेव टा एलिप्टिकली मूव करूची, ए जगह रे कोन होची ए वेव टा कंप्लीट होबा पई ए वेव टा एठी कोन कंप्लीट हेई परची बिकॉज़ ड्यू टू डेप्थ। किंतु धीरे धीरे जेतले ए वेव टा कोस्ट एरिया को जीवो, लेट्स से एठी के आसला, ए वेव टा एठी भी कोन होबो आपनकर पूरा कंप्लीट होबो। जेतले एठी के आसीबो आपण एठी जानथु ए वेव टा एठी कंप्लीट हेई परियोनी, एठी जो पूरा जो सर्कल टा एठी हेई जाउतला, एठी जो पूरा सर्कल टा होतला, जेतले लैंड जेतले कोस्टल रीजन को आसीबो ए वेव टा टोटली माने कंप्लीट सर्कल रे मूव करि परियोनी। अभी यदि कंप्लीट सर्कल रे मूव करि परियोनी कारण एठी शैलो हे गलानी, एठी डीप अछि किंतु एठी कोन अछि एठी शैलो अछि, एठी शैलो अछि, राइट। एठी डेप्थ अधिका नै, जेतले एटा गोटे कंप्लीट सर्कल रे एठी मूव करि परियोनी, नेक्स्ट कोन होबो एनीवन? यस बुझाला, एबे एबे जे हम जेति कथा कहले बुझाला समस्त? Yes, sir. ओके। तो जत जेतबेले मते कहंतु एठी कोन होची वाटर टा जेतबेले वेव मूव कर, जेतबेले एनर्जी टा मूव करची, हम जो वेव जेतबेले मूव करची तो वाटर मूवमेंट कोन होची एमती एलिप्टिकल पाथ रे मूव करची। एबे जेतबेले हमरो सेही पानी टा जेतबेले धीरे धीरे हमरो कोस्ट को आसी गला, एठी कोन होतला एठी पूरा बुली जाउतला, एठी पूरा बुली जाउतला। किंतु जेतबेले एठी के आसिला से कोन होबो एठी ऑब्स्ट्रक्ट होला, एठी जेतबेले ऑब्स्ट्रक्ट होबो नेक्स्ट कोन होबो एठी जो एठी ऑब्स्ट्रक्ट होला तो ता पछरे जो पानी थिबो सब्सिक्वेंट जो वाटर आसीबो से कोन करे आ ऊपर पाइला फेर, काहे कि से माने आ कंप्लीट सर्कुलर मोशन रे बुली परिबेन, से माने कोन हेबे आ ऊपर पाइला फेर। ता पछरे जो पानी आसतो से कोन करिवो ता ऊपर पाइला फेर, काहे कि एठी हमर पूरा कंप्लीट वेव टा कंप्लीट हेई परने, जेतबेले कंप्लीट हेई पारुनी ए पानी कोन होबो से माने पाइला फेर। ता पछरे जो पानी आसी ता ऊपर पाइला फेर, ता पछरे जो पानी आसी ता ऊपर पाइला फेर, आउ एमती पाइला फेकी वेव टा बहुत बड़ हे जिवो एंड दिस नियरली अबाउट 30 मीटर्स एंड दिस वेव इज नोन एज सुनामी। तो सेति पई गोटे कथा कहंदी कि जेतबेले हमर सुनामी वेव जेतबेले डीप ओशन रे थाए सेतबेले काहे कि सुनामी जेतबेले आसे हठात काहे कि कोस्ट पाखु आसिले ही जणा पड़े। डीप ओशन रे सुनामी को डिटेक्ट करिया बहुत कष्ट, काहे कि बिकॉज़ डीप ओशन रे एटा एते बड़ वेव टा आसुची बोली कि जानि परन, व्हाई बिकॉज़ द वेव gets the movement of the water gets completed, ठीक अछि। एठी जो सर्कुलर मूवमेंट करूची सेटा कोन होय कंप्लीट हे जाय, तो सरफेस रे एते बड़ पानी रो हाइट देखा जायनी। किंतु जेम जे धीरे धीरे से कोस्ट को आसे से वाटर पाइल अप हुए, पाइल अप होला परे कोन हुए सेटा सडनली पानी रो हाइट टा बढ़ी जाए, सडनली कोन हुए वेव रो हाइट टा बढ़ी जाए, आउ ई वेव टा को हमें कोन को सुनामी को। समझ बुझा हला मु कोन कहली मेकानिज्म सुनामी रो? Everyone, Yes, sir. anyone is having doubt on this in this? Okay, fine. So just see the notes here. What is tsunami? It is unusual
waves and originates from the earthquake, right? And how does it form? A powerful earthquake under the sea in a subduction zone generates tsunami. This is not earthquake, rather this is tsunami. Okay, a powerful earthquake under the sea generates tsunami. Then what will happen when the earthquake will be there in the subduction zone? This will displace an enormous amount of oceanic water. Okay, this will displace an enormous amount of oceanic water, and this wave move across the ocean surface along with the energy released. Okay, so ଆମର କଣ ହେଲା ଏଠି enormous water जोटा ମାନେ ବହୁତ mass of water କଣ ହବ ଏଠି displace ହବ, ଯେତେବେଳେ displace ହବ ସେଇ water ଟା କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର energy ସହିତ move କରିବା start କରିବ. See this diagram, this is the diagram that I was trying to explain there कि ଏଇଠି କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ wavelength ଟା ଦେଖଉଛି, ଏଇ wavelength ଟା ଏଇଠି କଣ ହଉଛି ଏଇଟା ପୁରା complete ହଉଛି, right? किंतु हाँ एठी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होउची, किंतु एठी आसिला परे तापर कोन होउची ए जो डेप्थ टा कमी गला, ए जो डेप्थ टा एठी एते डेप्थ थिला एठी टिके कमिला, एठी कोन होला डेप्थ टा कमी गला, तो डेप्थ कमिला ए पानी टा कोन होला एठी आउ कंप्लीट वेव फॉर्म करि परलानी, हेंस इट स्टार्टेड पाइलिंग अप एंड दैट लेड टू सुनामी. ओके, so these waves generated in the open ocean appear to be only small waves but grow rapidly in size as they reach the shallow coast and it piles up. Okay, and this is due to compression of the wavelength. 80 देखो एटा पूरा wavelength, this is the wavelength, right? 80 wavelength टा कंप्लीट होउची, किंतु धीरे धीरे 80 कोन होउची wavelength टा कंप्रेस हे जाउची, ए जो wavelength टा 80 कोन होउची धीरे धीरे कंप्रेस हे जाउची, सेति पे 80 वाटर टा आपनकर पाइल अप करची. Then what are the areas that is prone or prone to tsunamis? The largest number of tsunamis that we witness is in the Pacific ring. Okay, kahin ki Pacific ring re सबुठ अधिका होची? Anyone? सर earthquake पे? हाँ exactly, earthquake ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ଆମର जो Pacific plate ଅଛି ସିଏ କଣ होची ଆମର Eurasian plate as well as North American plate and the Indo-Australian plate ता under a subduct करची, right? That is the reason why we have lots of earthquake there due to this subduction. आ सेठी ओसनिक बेड रे होची, सेति पई हमर सेठी बहुत अधिका सुनामी देखिया को मिलची. ओके, and what are the causes? माने आमे जानि छ earthquake, but there are some other causes also such as landslide. Landslide रे कोन हो बहुत, let's say कि बहुत अधिका आपनकर लैंड मास कोन हो पानी रे जेतल जाय कि पडिवो तार कोन हो सेठी भी वाटर डिस्प्लेस हो. Okay, displaces huge mass of water, that will also lead to tsunami. Similarly volcanic eruption रे भी water displace हो, सेथरे भी हेई परियो. Meteorological events कोन, let's say गोटे meteorite आसी कि पानी रे आपनकर पडिवो, सेथुर भी कोन होबो आपनकर water displacement होबो. Anthropogenic activities like nuclear explosions, underwater nuclear explosion ala सेथुर भी कोन हेई परियो आपनकर tsunami हेई परियो. Okay, I think this is simple, I don't need to explain a lot in this. तापर characteristics, speed goes up to 800 kilometers or it can go more than this also, 900 1000 पाखापाखि भी wave ର speed जाई परियो, and wavelength is up to 500 kilometers. Our height can go up to 30 meters. Okay, can go up to 30 meters. So this is all about tsunami. आ विषय बेसिक किछि आउ नाही पढिया पे, and most probably tsunami रो आसियार चांसेस कम थाए, बट एतिकी आपण पढि देथिबे, एतिकी पढि देले सेठ जाय आपण आंसर लिखि दे पारिबे, आठो अधिक किछि दरकार नै. Okay, so fine, we'll move on to the next topic, that is our volcano. Tsunami रे कार डाउट अछि किछि? कहार सुनामी रे किछि डाउट अछि? Okay, we'll move to the next topic.
Our next topic is volcanism. Okay. Okay. Who can tell me what is a volcano? Yes, Sir, anyone? What is a volcano is a landform. volcano? Sir, Volcano volcano is is a a landform landform. in which the molten material, that is magma, comes out of the earth interior through a opening. Through opening. Okay, fine. Anyone else? Okay. Okay, volcano is not exactly a landform. We have volcanic landform, but volcano in itself is not a landform. Volcano ta kono? Volcano is the conduit or the pipe. It is simple word में pipe को दी तो exam में लिखिए अपने conduit लिखिए or the channel through which the molten material comes to the surface or oozes out to the surface. ता माने कोन माने आमर जेतबळे let's say this is your volcanic landform. एई जो conduit टा जो through जहा भितरु आमर बाहरी की आसुची जो conduit भितरु जोटु बाहरी की आसुची आमर molten material टा जो लावा magma टा जोटा बाहर को लावा हिसाब रे आसुची जो channel रो आसुची सेटा को हमें volcano को ये जो pipe टा ये जो conduit टा this is your volcano. Okay, what is volcanism? What is volcanism? Sir, the whole phenomena of volcano and the subsequent formation of landforms, and that is called volcanism. Okay, fine. Volcanism refers to the process through which the molten material or the magma that comes out as lava and forms a landform. Okay, that is your volcanism. So just see here. Just a second. Okay, fine. So, what is a volcano? It refers to the conduit or the pipe, as I said. Okay, or a linear fracture through which the eruptions takes place. Okay, fine. Then what is volcanism? Volcanism refers to the process of eruption of molten rock and gases to the earth's surface. The process through which the molten material that is there inside the earth's surface, it is coming out. That process is known as your volcanism. Okay. तो आम जो volcanism अच्छी सेटा जो eruption टा हुए सेटा दी टाइप रो eruption हुए. Okay, one eruption is your central type. Okay, central type of eruption. आउ गोटे जोटा eruption हुए that is your fissure type. Just a second. Yes, first is your central type and second is your fissure type. So just let's see what is your central type of eruption and what is your fissure type of eruption. जो central type of eruption थाए सेटा कोन होबो आपनकर गोटे एमदिया vertical opening रहिबो. ओके, सेई थ्रू आपनकर magma टा बाहर को बाहरियो as lava. Okay, this is your central type. आ गोटे आमे जो fissure type पढले fissure type रे generally कोन होबो let's say this is your land. Okay, fissure type रे एमते linear fracture होबो. ए जो पार्ट टा देखुचंदी ए जो पार्ट टा देखुचंदी fissure type रे एमते linear fracture हुए किंतु आपनकर सेंट्रल टाइप रे कोन होबो एमती गोटे vertical conduit रहिबो vertical pipe रहिबो जो थ्रू की आपनकर magma टा बाहर को आसीबा लावा किंतु fissure type रे आपनकर एमती गोटे linear fracture रहिबो. Okay, can anyone give an example of this linear fracture?
कोठी एमते देखिया को मिले लिनियर फ्रैक्चर टा केमती हुए कहि दउची लिनियर फ्रैक्चर टा जनरली कोन होबो लेट्स से दीटा प्लेट अछि ए एंड बी जेतले ए प्लेट दीटा दे विल डाइवर्ज ए प्लेट दीटा जेतले डाइवर्ज कर जिवे लेट्स से ए एठी पळे आसला बी एठी पळे एबे एठी कोन होबो जेतले पळे आसले एठु एबे volcanic eruption होबो ओके सो दिस इज योर linear type of fracture ठीक अछि तो एबे की मते कहि परिबे कि एमती कोठी देखिया को मिले सर आफ्रिका रे सेठी अछि कि जो तार साउथ ईस्ट आड़े ईस्टर्न अफ्रीका रे यस ईस्टर्न अफ्रीका रे अछि आउ कोठी अछि जोटा कि बहुत कॉमनली सर हमें सर याउ से मिडिल ईस्ट पाखरे भी अछि कि मिड ओशनिक बेल्ट जो मिड ओशनिक रिजेस आपन को देखा जाउची सेठी हमर कोन होजे हमें कथा हेतिले कि सेठी प्लेट जो अटलांटिक मिड अटलांटिक रे हमर कोन होजे प्लेट डाइवर्स करची आपरे एंटायर मिड अटलांटिक जो बेल्ट अछि सेठी कोन अछि हमर रिजेस फॉर्म हेची सेटा ही लिनियर फ्रैक्चर रु हेची सेटा लिनियर फ्रैक्चर रु हेची ओके अंडरस्टूड यस सर okay so types of volcanic eruption what are central type रे कोन होबा eruption takes place through a central pipe and forms conical hills ठीक अछि एठी कोन होबा आपनकर conical hills form हो माने एई भलिया फॉर्म हो सेंट्रल पाइप जे तळे किंतु जेतळे आपनकर जेतळे फिशर टाइप हो एई भलिया हो तो सेठी जनरली कोन होबा आपनकर सेठी जनरली आपनकर सील्ड फॉर्म हो सेठी जनरली आपनकर सील्ड फॉर्म हो कहीं सेंट्रल सेटा आउट टिके परे आपन जानि जिवे सेंट्रल टाइप रे कोन होबा आपनकर जो वोल्केनिज्म टा हुए सेथिरे कोन हुए आपन जस्ट अ सेकंड हां सेंट्रल टाइप रे आपनकर जो वोल्केनिज्म टा हुए सेटा कोन हुए आपनकर बहुत वायलेंट हुए ता रीजन म आपन को टिके आगे कर जे हम टाइप्स ऑफ लावा पढेबी से तळे कहबी बहुत वायलेंट हुए आ एटा बहुत दूर आपन का स्प्रेड हेई पारे ए जो लावा टा बहुत दूर को स्प्रेड हेई पारेनी सेहिति पई एठी कोन हुए कोनिकल हिल्स फॉर्म हुए किंतु फिशर टाइप रे कोन हुए ए जो लावा एठु बाहरे से कोन हुए बहुत दूर को स्प्रेड हेई पारे सेथि पई सेठी हमर कोन हुए एठी जदी भाबंतु पूरा एई भलिया स्टीप स्लोप रहइबो फिशर टाइप रे आपनकर एई टाइप रो माने टिके जेंटल स्लोप रहइबो सील टाइप स्लोप्स रहइबो ओके सेटा हम जल्दी देखिबा आगु okay so this is okay I will show you see this is a fissure type in fissure type you will have a linear fracture in fissure type you will have a linear fracture leading to horizontal sheets or seal okay मु जो आपन को कहउथिली कि कोनिकल टाइप होबो एटा हला आपन को जेतले सेंट्रल टाइप होबो एई भलिया कोनिकल हिल्स आपन पाइबे आ जेतो बळे आपन को फिशर टाइप होबो फिशर टाइप होबो एटी देखन केनी स्प्रेड होची एटी केनी स्प्रेड होची फिशर टाइप हले आपन कोन होबो सील्ड वोल्केनो होबो ओके जेमती हमर डेकन प्लेट्यू अछि सेटा ओटे सील्ड ओके सेठी एमती फिशर टाइप हले हमर सील्ड वोल्केनोस होबो ओके सो नेक्स्ट let's discuss what are the constituents of volcanoes what are the constituent of volcanoes so constituent of volcanoes mainly it is comprised of two things okay one is water vapor and gases and the other is pyroclastic material so water vapor and gases obviously you know about this water vapor माने कोन जेतले हमर वोल्केनिज्म होबो इरप्शन होबो सेतुर कोन सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन ये सब जनरेट हुए and it accounts for about 60% of the material erupted मैं एटा ए सब काहे पढौची मे बी वोल्केनिज्म रे जदी क्वेश्चन बनियो मे बी से माने कहि देबे कि व्हाट आर द constituents of the volcanoes कि what are the material that describe the different types of material that comes out during a volcanism ठीक अछि और the type of landforms that is formed ठीक अछि तो एई पार्ट ता अपन जानिथिले सेई आंसर ता टिके इजीली लिखि परिबे so constituent of volcanoes as I said
water vapor and gases. And here the pyroclastic material. Pyroclastic, pyro means, what do you mean by pyro? It is related to fire. Okay, so pyroclastic material means the solid material that comes out of it, the burnt material that comes out of the volcano, such as stone, pebbles, etc. So these are the two types of material that comes out. गोटे हला आपनकर वाटर वेपर गैसेस आ गोटे पायरोक्लास्टिक मटेरियल जोटा कि बर्न्ट मटेरियल जो लावा आछि कि आपनकर स्टोन्स, पेबल्स, वोल्केनिक बॉम्ब्स ए सब हला आपनकर पायरोक्लास्टिक मटेरियल. ओके, सो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ लावा. जो वोल्केनिज्म हुए, जो लावाटा बाहर को आसे, से लावाटा आपनकर दी टाइप थाए. मते लागु जदी आपनकर वोल्केनो रो क्वेश्चन आसीबो सबुठू इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा हे परियो जदी आसीबो. क्वेश्चन आछी मते लागु दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन कम. ओके, सो टाइप्स ऑफ लावा एसिडिक आउ बेसिक लावा दी टाइप रो लावा थाए. हम प्रीलिम्स पई तो किछ ना किछ पढी थिबे कि कहि परिबे एसिडिक लावाटा कोन, बेसिक लावाटा कोन? यस सर एसिडिक लावा रे सिलिका कंटेंट अधिक थाए. ओके, आउ तार विस्कोसिटी कम, माने सेटा ऑडियो फ्लो करेनी. एटा अधिक अधिक फ्लो फ्लो करे करेनी. ना फ्लो करेनी. करेनी. सो विस्कोसिटी आरो अधिक थाए. ओके, यस तापरे सर आउ एटा लाइटर इन कलर कंपेयर टू बेसिक. ओके, बेसिक रे कोन थाए आ जगह रे? एटी सिलिका, एटी कोन थाए? सर आयरन थाए और विस्कोसिटी ओके, यार कम थाए तो अधिक विस्कोसिटी कम रहइबा. ओके ओके, एत्ती की जदी अधिक स्प्रेड कर पर. हां, एत्ती की जे जानि देइछो, एत्ती की एई दीटा जिंस आपण मन रखिबार अछि. ठीक अछि कि सिलिका थाए आउ आरो विस्कोसिटी सिलिका अधिक हबारो आरो विस्कोसिटी अधिक थाए. बस एई दीटा जिंस मन रख, बाकी जिंस डिराइव हे जो अछि. सिंपल कथा कि जदी विस्कोसिटी एटे अधिक अछि, ठीक अछि, ता माने ये फ्लो करि परिबोनी. राइट, ये अधिक बाट फ्लो करि परिबोनी. ता माने एटी को टाइप रो वोल्केनो फॉर्म होबो? कोनिकल शेप माउंटेन शेप. कोनिकल. यस, एटी सील्ड सील टाइप. माउंट. राइट, हाँ, माउंट, सील जहाँ भी आपण कहंतु. ठीक अछि, एठी हमरो कोनिकल टाइप फॉर्म होबो. एबे मते कहंतु कि एई दीटा भितरु हमरो कोउटा बेसी वायलेंट होबो? एसिडिक. एसिडिक. काहेकि? यस, सर यार विस्कोसिटी एसिडिक नेचर पे से हाई स्पीड से बाहरी हो बोली. ओके, आउ के किछ कहबे? सर मेनली आई थिंक विस्कोसिटी होबो. यस, देखो विस्कोसिटी अधिक अछि माने इजीली फ्लो करिवो. यदि इजीली गोटे जिंस फ्लो करि जिवो ता माने कोन होबो? सेटा साइलेंटली फ्लो करि जिवो. यस और नो? राइट, किंतु यस गोटे सर. जिंस जदि इजीली फ्लो न करिवो ता माने इट विल बर्स्ट आउट. एक्सप्लोजन टाइप. हाँ, एक्सप्लोजन बहुत जोर एक्सप्लोड करिवो, इट विल बर्स्ट आउट. तो सेति पई एटा कोन होबो? एटा बेसी वायलेंट रहइबो. ठीक अछि, किंतु एटा साइलेंट रहइबो. ओके, सो आपन को एई दीटा मेनली मन रखियर अछि कि एसिडिक रे सिलिका अछि एंड बेसिक रे आपनकर आयरन अछि. आउ सिलिका जोटा अछि सेथरे आपनकर विस्कोसिटी अधिक अछि. ओके, so let's see the points. Higher concentration of silica is present in acidic, higher concentration of iron is present in basic. This is lighter in color, this is darker in color. In the darker, ठीक अछि, आपण लाइटर में भी मन रहइबोनी, किंतु आयरन टा मन रखले आपण मन रख परियो कि हां डार्क हेतिबो. राइट, तो एटा आपण जदी मन रखिबे एई कलर टा आपनकर मन रहिबो. This is viscous, this is less, this is more viscous, acidic. तो जो लावाटा रहइबो सेटा कोन थिक रहइबो. ठीक अछि, आ एटा अधिक विस्कस रहइबो. एटा को आपण चाहे आ गोटे पॉइंट भी करि परिबे कि ये विस्कस अधिक आ शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल करिवो, ये किंतु लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल कर परियो. ओके,
आउ एठी जो इरप्शन टा हबो एसिडिक रे वायलेंट हबो, एठी लेस वायलेंट और साइलेंट इरप्शन हबो। ओके, आउ इठी हमको कोन मिलिबो एसिडिक रे वोल्केनिक माउंटेन्स, आउ बेसिक रे प्लेट्यूज सील्ड्स ए सब जिंस मिलिबो। ओके, आई गेस एटा समस्त क्लियर, किछि डाउट अछि एथिरे आगु बढ़िया। Yes. ओके, सो नेक्स्ट बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ इरप्शन, ठीक अछि। ए टॉपिक पढे आगु गोटे डिस्क्लेमर दउची। पीरियड ऑफ इरप्शन हिसाब रे हमरो तीनटा three types of volcanoes, we can classify it into three types of volcano based on the period of eruption. गोटे हला एक्टिव, गोटे हला डोरमेंट, आ गोटे हला एक्सटिंक्ट। तो एबे किंतु एक्टिव, डोरमेंट की एक्सटिंक्ट ए जो जिंसटा एटा एक्चुअली बहुत सब्जेक्टिव। ओके, एटा बहुत सब्जेक्टिव काहे कि बहुत थोड़ा भाबंत कि ओके गोटे वोल्केनो डोरमेंट हे जाईची, से किंतु कोन हबो हठात एक्सपेक्टेशन नथाय किंतु इरप्ट करि जाय, ठीक अछि। सेहिति पई ए जो जिंसटा बहुत सब्जेक्टिव। तो मे बी आपण को बहिरे मिलिबो कि जीए 50 इयर्स कि 100 इयर्स हला इरप्ट हेनी, सीए हला माने 50 इयर्स कि 100 इयर्स हला इरप्ट हेनी, 100 इयर्स हला इरप्ट हेनी, सीए हला डोरमेंट, ठीक अछि। किंतु कोठी आपण मिलिबो मे बी कोठी 500,000 इयर्स हला इरप्ट हेनी, सेटा हला आपण डोरमेंट। तो भाबंतु आपण खाता जने चेक करछन तांको किछि गोटे इन्फॉर्मेशन मिली छी, आउ किंतु आपण किछि गोटे आउ कोड पढी चंदी। सो सेई जगह रे कोन करिवे, आपण जते ऑब्जेक्टिव करियो ट्राई करिवे सेते भलो हबो। तो सेथि पई आपण जेतले आपणकर डेफिनेशन लिखिबे कि दिस इज योर एक्टिव, दिस इज अ डोरमेंट, दिस इज एक्सटिंक्ट, जोडी जनरली आपण सब्जेक्टिव थाए, सेठी कोन करिवे आपण जेन फॉर एग्जांपल एठी मु जो टाइम पीरियड टा नैची सेटा मु यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे रो टाइम पीरियड टा नैची। तो मु आपण को कोन कहबी जेतले आपण लिखिबे, आपण कोन लिखिबे as per the United States Geological Survey an active volcano is this, dormant volcano is this, extinct volcano is this। सेतुर कोन हबो आपण जो ई जिंसर जो सब्जेक्टिविटी टा अछि सेटा कम हे जो। जदि भी तांको पाखरे किछ अलगा इन्फॉर्मेशन थिबो किन सीए देखिबे अच्छा ये तो गोटे गवर्नमेंट डेटा एटी देइ चंदी, राइट। तो सेटा को सीए डिनाई करि परिबे। तो सेया हमर बेस्ड पीरियड ऑफ eruption as per United States Geological Survey an active volcano is that which has erupted in the recent past, let's say as a decade, in some decades, okay, decades। and dormant volcano koda that haven't erupted in thousands of years, je thousands of years e erupt heini। and extinct is one which has not erupted in lakhs of years। okay, so this is the classification as per USGS, ठीक अछि। तो एई नाटा लिखि कि आपण एटा लिखि परिबे जोटा रिसेंट डिकेड्स रे इरप्ट हेछि दैट इज एक्टिव, जोटा थाउजेंड्स ऑफ इयर्स रे इरप्ट हेनि दैट इज डोरमेंट, आउ जोटा आपणकर लैक्स ऑफ इयर्स हेलानी इरप्ट हेनि दैट इज योर एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ओके, क्लियर ए पार्ट टा। एथरे बहुत किछि बुझियार नै, ठीक अछि, फैक्चुअल जिंस आगु पळेबा। सो नेक्स्ट आपणकर ओके गोटे थरो मे बी आपन को कंफ्यूजन होबनी कम पढाई छी। वोल्केनो कोन आमे जानले, वोल्केनो रो वोल्केनिज्म कोन जानले, राइट। तापरे टू टाइप्स ऑफ इरप्शंस, गोटे आमे जानले कि सेंट्रल टाइप, आ गोटे आमे जानले फिशर टाइप, ठीक है। वोल्केनो वोल्केनिज्म टू टाइप्स ऑफ इरप्शन। तापरे वोल्केनो रे हमरो जो वोल्केनिज्म हुए सेथिरे को टाइप मटेरियल बाहरे, एटा एते इंपोर्टेंट नुहे, दिस पार्ट इज नॉट दैट इंपोर्टेंट बट देई देछि कोठी काम आ जाई पारे। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ लावा। नाउ we are going to discuss the volcanic landforms। तो volcanic landforms दी टाइप रो अछि, ओके। गोटे हला इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, आ गोटे हला एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। की कहि परिए इंट्रूसिव लैंडफॉर्म टा कोन? सर इंट्रूसिव सर वोल्केनो तो भितरे जोटा फॉर्म होइछि। ओके, आउथरे कोन समकली इनसाइड ऑफ द वोल्केनो जोटा जा भी किछि फॉर्मेशन हेइ थाए तार ओके इंटरनल स्ट्रक्चर का कहि परियो, तो सेटा को ओके सर बिलो द हाँ सरफेस ऑफ अर्थ। below the surface, yes, this is more accurate।
जेतबेले हमर बेले बेले कौन हुए कि जेतबेले हमर वोल्केनिज्म हुए ठीक बेले बेले कौन हुए जेतबेले हमर मटेरियल गरम ही ऊपर को आसे मे बी सीए सरफेस जाय पहुंची पारेनी आउ भितरे ही सॉलिडिफाई हे जाय भितरे ही जस्ट अ सेकंड भितरे ही सॉलिडिफाई हे जाय फॉर एग्जांपल सी दिस ए माने सरफेस जाय पहुंची पारनांदे ओके और भितरे ही सॉलिडिफाई हे जाय चंदी सो दीज landforms are known as your intrusive landforms. Okay, these landforms are known as your intrusive landforms. So what is an intrusive landform? A intrusive landform is formed by molten material that solidifies underneath the earth surface. से जो solidify होबो से कोन होबो earth surface भीतर ही solidify हे जिवो से बाहर जाय आसी परिबन सेटा हला intrusive landform. तो ये जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म अछि से बहुत डिफरेंट शेप एंड साइजेस रे हम सेटा क्लासिफाई कराई छी ओके सो मेनली ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो आरो अछि आरो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन अछि दी टाइप ओके गोटे हला बैथोलिथ गोटे हला स्टॉक्स हां जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स को हमें प्लूटोनिक रॉक्स भी कहू ओके इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स को हमें प्लूटोनिक रॉक्स भी कहू आउ ए माने दी टाइप रे डिवाइडेड गोटे हला बैथोलिथ आ गोटे हला स्टॉक्स ओके तो बैथोलिथ टा कोन बैथोलिथ हला ह्यूज इग्नियस इंट्रूजन एटा बहुत बड़ बड़ लैंडमार्क्स लाइक माउंटेन्स अंडर द अर्थ सरफेस ठीक अछि बहुत बड़ बड़ लैंडमार्क्स लाइक माउंटेन्स अंडर द अर्थ सरफेस बहुत लार्ज एरिया रे थांती और अंकर किछि फिक्स शेप साइज न थाए ठीक अछि बैथोलिथ रो किछि ठीक शेप साइज न थाए जस्ट हां एटा देखंतु एटा हां ए पार्ट टा ये এই পার্টটা এসব হলো আপনার ব্যাথোলিথ ওকে বহুত হিউজ extended in large area but does not have any shape and size okay so that is your batholiths ठीक अछि तापर स्टॉक्स कोन स्टॉक हला कलेक्टिव टर्म गोटे स्टॉक को गोटे टर्म सेटा कलेक्टिव टर्म बहुत गुडे छोट छोट इग्नियस इंट्रूजन पे बैथोलिथ कोन गोटे ह्यूज इग्नियस इंट्रूजन किंतु स्टॉक कोन स्मॉल साइज बैथोलिथ टा हमर कोन एटा ह्यूज राइट किंतु हमर स्टॉक्स टा कोन सेटा हला स्मॉल साइज इग्नियस इंट्रूजन्स आउ स्मॉल साइज इग्नियस इंट्रूजन रो कलेक्शन बहुत गुडे स्मॉल साइज इग्नियस इंट्रूजन हे कि सेटा हमर ताको हम कलेक्टिवली स्टॉक्स को ओके आगु जीवा आगु म आपन आउ गोटे खाली पॉइंट कहूची दैट इज discordant igneous intrusions and concordant igneous intrusions के कहि परियो discordant igneous intrusion कोन और concordant igneous intrusion कोन So discordant means there is a gap between the formation of the rocks, like phase by phase it happens. okay anyone else डिस्कॉर्डेंट सर वर्टिकल गोटे जिनिस रॉक कट करके ऊपर को जीवो किंतु कॉन्कॉर्डेंट रे हॉरिजॉन्टली मूव करबो काहा को कट करबोनी okay okay so discordant माने जेतो बळे आपनकर लेट्स से रॉक स्ट्रक्चर टा एमती अछि लेट्स से एटा आपनकर रॉक स्ट्रक्चर ठीक अछि बेडिंग टा रॉक रो बेडिंग टा एमती अछि आउ एई बेडिंग रे लेट्स से एठी गोटे इग्नियस इंट्रूजन फॉर्म होछ एमती सेटा एमती फॉर्म हेछ मते गोटे कथा कोन ये जो हमर बेडिंग प्लेन जो अछि से प्लेन रो स्ट्रक्चर को फॉलो करछ कि नै Yes, sir. ओके लेट्स से आउ गोटे अछि ए टाइप रो आउ गोटे इग्नियस इंट्रूजन अछि ए टाइप रो लेट्स से दिस इज बी दिस इज ए एबे बी हमर जो रॉक रो बेड को बेड जो स्ट्रक्चर अछि ताकू फॉलो करछि यस और नो No. no so this is your discordant igneous intrusion which doesn't follow the underlying rock strata au एटा कोन आपनकर concordant which follows the underlying rock strata okay so this is the difference between your discordant rock strata au concordant rock strata batholith ta obviously आपनकर discordant intrusive igneous intrusions काहे कि कारण देखो से किछि फॉलो कर से एठी की
से एठी आकु भांगी की याडे गलानी राइट तो एठी से फॉलो करनी तो सेथि पई एटा कोन होला डिस्कॉर्डेंट बैथोलिट टा अपन डिस्कॉर्डेंट एबे हमें स्टॉक्स टा देखियो तो स्टॉक्स आपनकर मु कहली कलेक्टिव इग्नियस स्मॉल इग्नियस इंट्रूजन को मिसे के हमें स्टॉक को तो फर्स्ट स्टॉक है फर्स्ट आपनकर आसीबो सील सील टा कोन गोटे फ्लैट सीट लाइक इग्नियस इंट्रूजन फ्लैट सीट लाइक इग्नियस इंट्रूजन सी हियर एटी देखंदो एटा 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 एमाने कोन फ्लैट सीट लाइक इग्नियस इंट्रूजन आकु सील कहंती एमाने कॉन्कॉर्डेंट एमाने काहे कि एमाने रॉक रो स्टार्टा को फॉलो करछन्ती एमाने रॉक रो स्टार्टा को फॉलो करछन्ती तो से एमाने कोन हले कॉन्कॉर्डेंट एंड इट फॉलोज द रॉक स्टार्टा सेति पई आकु कोन हां आकु कोन कहंती कॉन्कॉर्डेंट एंड igneous it is a part of the stock au concordant and it is seat like ठीक अछि तो आपको सील कहंती नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट डाइक टा कोन डाइक टा गोटे थीन वर्टिकल स्ट्रक्चर एट देखंती एटा गोटे थीन वर्टिकल स्ट्रक्चर ओके which breaks through the rock strata एटा हमर रॉक स्ट्राटा ये कोन करछ एटी भांगी की रॉक स्ट्राटा को भांगी की ता ऊपर को जाउची सो इट इज कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट डाइटा डिस्कॉर्डेंट ओके सो आपण स्टॉक जानले आउ डिस्कॉर्डेंट सॉरी डाइक जानले नेक्स्ट आपनकर लैकोलिथ टा कोन लैकोलिथ लेंस शेप इग्नियस इंट्रूजन एटा देखो लेंस शेप अछि एई बळे अछि लेंस शेप व्हिच हैज अ फ्लैट बेस तार जो बेस टा अछि सेटा कोन अछि फ्लैट अछि लेंस शेप इग्नियस इंट्रूजन एंड हैज अ फ्लैट बेस एंड रेज द रॉक स्ट्राटा ओवर इट ये कोन करिवो ता ऊपर जो रॉक स्ट्राटा थिवो ताकू टिके अपलिफ्ट कर दिए एट देखंतु एई पार्ट टा टिके अपलिफ्ट हे जाईची बिकॉज़ ऑफ दिस लैकोलिथ ये फ्लैट बेस लेंस शेप फ्लैट बेस आउ कोन करिवो ता ऊपर जो रॉक स्ट्राटा थे ताकू टिके कोन करिवो से अपलिफ्ट कर दे ठीक है ताकू टिके से कोन करिवो एमती अपलिफ्ट कर दे ऊपर को डिफॉर्म कर दो ठीक अछि सो दैट इज योर लैकोलिथ तापरे आपनकर एठी डायग्राम रे नाही लोपोलिथ आउ पैकोलिथ ओके एठी डायग्राम रे नाही जस्ट अ सेकंड सी लोपोलिथ टा कोन एटा आपनकर सॉसर शेप हां एठी गोटे एठी डाइक स्पेलिंग टा भूल अछि ओके so seal what is seal is your flat sheet like igneous intrusion एटा आपनकर कोन concordant dike it is your thin wall like igneous intrusion cutting across the layers of the rock strata ठीक अछि एटा कोन आपनकर discordant then is your लोपोलिथ एटा कोन सॉसर शेप इग्नियस इंट्रूजन एटी ए डायग्राम रे एटी देखैनी बट सॉसर शेप इग्नियस इंट्रूजन माने आपण सील आउ ए जो सील अछि सील आउ आपनकर आगु को पढिबी आगुटे जिंस दैट इज पैकोलिथ सेटा सील आउ पैकोलिथ रो मध्य मध्य माने सील टा पूरा फ्लैट आउ पैकोलिथ टा आपण देखिबे कि पूरा ए बळिया माने हमर जो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन थाए सीए सेठी फॉर्म हुए एंड लेट्स से दिस इज योर रॉक स्ट्राटा आपन जो सील टा फॉर्म जो पैकोलिथ फॉर्म हुए से कोन करे एटी फॉर्म हो आपन पैकोलिथ टा एटी फॉर्म हो ठीक अछि आउ एटी फॉर्म हो ए ऊपर एटी फॉर्म हो पैकोलिथ टा ए बळे फॉर्म हो ओके किंतु आपनकर जो लोपोलिथ अछि सी हबो से पूरा सील बळे फ्लैट नो कि पूरा पैकोलिथ बळिया एते साइनियस नो से केमते रहइबो से टिके जस्ट सॉसर शेप रहइबो टिक मझिटा खाली टिके तार जो डेप्थ एते अधिक रहइबो नि शैलो रहइबो
आउ एक्सटेंसिव रहइबो बहुत अधिक एक्सटेंसिव रहइबो आउ डेप्थ टा जो अछि सेटा शैलो रुहे ओके शैलो डेप्थ एंड एक्सटेंसिव एटा हला आपनकर कोन लोपोलिथ the see here lopolith it is saucer shaped igneous intrusion okay it how would लिख दोची it is extensive and shallow ठीक है this is a lopolith pacholith मुझे कहली lens shaped and this is formed in a syncline and anticline माने एमती रहला ठीक अछि सेटा कोडी फॉर्म होबो ए एरिया रे फॉर्म होबो this area and this area ठीक अछि syncline और anticline रे फॉर्म हो pacholith then is lacolith तो आपन तळे देखैतिली it is lens shaped flat base forces the overlying strata into a dome ए जो overlying strata टाकू से कोन करिवो डोम भलिया कन्वर्ट कर दबो एटाकू एट एटा डोम भलिया को कन्वर्ट कर दला ओके एटा समसम क्लियर intrusive igneous formations everyone Yes. okay fine next चलन देखिया extrusive igneous एटा intrusion तो न extrusive landforms ओके तो volcanism रे हमर दी टाइप फॉर्म होची जदी वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स पचारिबे दी टाइप अपन डिवाइड कर देबे गोटे हला इंट्रूसिव गोटे हला एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव रे आपनकर दी टाइप बैथोलिथ एंड स्टॉक्स ठीक अछि स्टॉक्स टा स्मॉल साइज igneous intrusions कलेक्शन ऑफ स्मॉल साइज igneous intrusions तापरे हमें आसीबा एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स को ओके एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स रे फर्स्ट हला आपनकर क्रेटर वोल्केनो किछि नै कोन हमर जतळे वोल्केनिज्म होची हमर ए जो मझिर जो कंडुइट जो ओपनिंग टा ठीक अछि ऊपर जो ओपनिंग टा एटी कोन हो हल्का डिप्रेशन फॉर्म हो एटी कोन हो हल्का एमतिया डिप्रेशन फॉर्म हो ओके ए जो डिप्रेशन टा जो नॉर्मल वोल्केनो जोटा आपण देखथि सेटा हला क्रेटर वोल्केनोस ए जो डिप्रेशन टा फॉर्म हुए सेटा को आपण को सेही वोल्केनोस को आपण कोन कुआ हुए क्रेटर वोल्केनोस कुआ हुए ठीक अछि एटा कोन हो बाउल शेप रहइबो आ स्टीप साइड्स रहइबो ठीक अछि आ बेले बेले कोन होय जेतले लेट्स से एई वोल्केनोटा कोन हला आपनकर एक्सटिंक्ट वोल्केनो हे गेला एटा एक्सटिंक्ट वोल्केनो हे गेला कि डॉर्मेट अछि तापर लेट्स से एई एरिया रे कोन होबा आपनकर पानी जमी गेला ए जो सॉसर शेप अछि जो डिप्रेशन टा अछि ए डिप्रेशन रे आपनकर पानी जमी गेला तो सेटो को हमें कोन कहबा क्रेटर वोल्केनो आ एठी जदी तार डिप्रेशन रे पानी जमी गेला ताको हम कोन कहबा क्रेटर लेक okay crater volcanoes it is bowl shaped depression okay it has steep sides ठीक अछि कारण conical volcanoes भी form हुए it has steep sides and if water gets accumulated here it may turn into a crater lake okay fine तापरे देखिया caldera volcano caldera टा जनरली हमर जो क्रेटर वोल्केनो थाए लेट्स से एठी आसिकी हमरो मैग्मा सॉलिडिफाई कर देछि ए एरिया रे मैग्मा सॉलिडिफाई कर देछि आ एबे तळु कोन होउची आ बहुत हीट जनरेट होउची एबे तळु कोन होउची बहुत अधिक हीट जनरेट हला किंतु एटा बहुत अधिक सॉलिडिफाई हे कि अछि एटा बहुत अधिक सॉलिडिफाई हे कि अछि तो ये जतो बळे तळु हमरो मैग्मा टा जतो ऊपर को राइज करछि से कोन करिवो एठी जो अधिक सॉलिडिफाई हे कि अछि एई पार्ट टाकू बहुत जोर बर्स्ट करी कि बाहर को बाहरिबो सब्सिक्वेंट जतो बळे आपनकर वोल्केनिज्म होबो एई पार्ट टाकू बहुत जोर बर्स्ट करी कि बाहर को बाहरिबो जतोळे एई पार्ट टाकू बहुत बर्स्ट करी कि बाहर को बाहरिबो सेतोळे कोन होबो एई पार्ट टा आपनकर कोन होबो कोलैप्स कर जाई पारे एई पार्ट टा आपनकर कोलैप्स कर जाई पारे आउ आपनकर गोटे एमतिया बड़ लेक फॉर्म हे गोटे बड़ डिप्रेशन फॉर्म हे जाई पारे गोटे बड़ डिप्रेशन फॉर्म हे जाई पारे सेतळे जो छोटो डिप्रेशन फॉर्म हेतला एठी जो मटेरियल थिला सब्सिक्वेंट मे बी लेट्स से सेटा कोन हेतला बहुत सॉलिडिफाई हे जाईथिला सब्सिक्वेंट वोल्केनिज्म बेले कोन हला सेटा बहुत जोर बर्स्ट हबो आउ सेटा कोलैप्स कर जिवो
कोलैप्स करिवो सेतबेले कोन हबो बहुत बड़ आपनकर गोटे डिप्रेशन फॉर्म हबो सेटा को हम कोन को कैल्डेरा वोल्केनो ओके इट इज नथिंग बट अ वेरी लार्ज बेसिन शेप्ड क्रेटर जो क्रेटर थिला सेमतिया किंतु गोटे बहुत बड़ डिप्रेशन रहिबो सेटा कोनती लार्ज बेसिन शेप्ड क्रेटर इट इज फॉर्म्ड बाय द कोलैप्स ऑफ द वेंट ए जो वेंटटा थिला एठी आगुरु से वेंटटा कोलैप्स करिकि एटा आपनकर गोटे बहुत बड़ डिप्रेशन फॉर्म होला ओके okay so next is your plug plug टा कोन plug किछ नुहे हमर एटा गोटे वोल्केनो थिला ठीक अछि एठी कोन एगुडा कोन हमर वोल्केनिक डिपॉजिट्स एठी कोन अछि हमर वोल्केनिक डिपॉजिट्स एठी भी कोन अछि वोल्केनिक डिपॉजिट किछि टाइम परे जेतोले लेट्स से आउ सब्सिक्वेंट वोल्केनिज्म होउनी एबे कोन होबो ए जो साइड गुडा एगुडा लेट्स से इरोड हला ई साइड गुडा लेट्स से इरोड हला ठीक अछि साइड गुडा इरोड हेकी खाली हमर कोन हला सेंट्रल पार्ट ता रहि गला खाली जो सेंट्रल कंडुइट पाइप ता एटा एक्सपोज हेकी रहि गला एटा को हमें कोन को प्लग को एटा को हमें कोन को प्लग को ए पार्ट ता हमर प्लग ओके व्हाट इज इट इज नथिंग बट अ पिलर ऑफ हार्ड रॉक left by a volcano after erosion of its sides ठीक अछि पिलर ऑफ हार्ड रॉक left by the volcano after erosion of its sides that is your plug next is your sealed volcano एटा म ऑलरेडी आपन कहि सारछि आ किछि मते पुनी कहया दरकार नै have much lower height and are spread in a wide area ओके एटा म आपन स्टार्टिंग रे कहि देथि जेतले कोनिकल वोल्केनोस आउ सील्ड वोल्केनोस विषय कहउतली सील्ड वोल्केनोस रो कोन होय आपनकर बेसिक लावा रहे आउ से बहुत दूर जाय से लावा हमर स्प्रेड होई पारे तो हाइट बहुत कम रहे आउ तार किंतु बहुत एक्सटेंसिव एरिया रे सेटा स्प्रेड हो जाय दैट इज अ सील्ड वोल्केनो नेक्स्ट इज अ कंपोजिट वोल्केनो व्हाट इज दिस कंपोजिट वोल्केनो कंपोजिट वोल्केनो एठी कोन हुए एठी अल्टरनेटिव लेयर ऑफ लावा और एश रहइबो जेतबेले आमे वोल्केनो जेतबेले बाहरिबो जेतबेले वोल्केनो जेतबेले इरप्ट करिवो सेतबेले कोन होबो बेले बेले वोल्केनो भितरु लावा बाहरे राइट आ बेले बेले कोन हुए वोल्केनो भितरु आपनकर गैसेस एश एक्सेट्रा बाहरे राइट तो कंपोजिट वोल्केनो रो कोन हुए फर्स्ट लेट से गोटे थर इरप्शन होउची आ सेही थर आपनकर कोन होबो आसी के एठी आपनकर आसी के एठी कोन होला लावा डिपॉजिट हेला लावा डिपॉजिट हेला तापर कोन होला सब्सिक्वेंटली पुनी किछि दिन रे इरप्ट कला किंतु आउ सेते लावा नथिला कारण ऑलरेडी इरप्ट हेची लेट से गोटे एक्टिव वोल्केनो अछि इरप्ट हेची आ सेते लावा नाही तो सेतबेले कोन होबो से जगह रे आपनकर एठी एश आसी के डिपॉजिट हला एठी आसी के आपन कोन हला एश डिपॉजिट हला पुनी नेक्स्ट टाइम आउ थरे जेतबेले वोल्केनो हबो वोल्केनिज्म हबो सेतबेले पुनी कोन हबो एठी आसी के आपनकर लावा डिपॉजिट हबो एरिया रे तापर पुनी आपनकर एश डिपॉजिट हबो सो जेतबेले एंती अल्टरनेटिव लेयर रहिबो जेतबेले अल्टरनेटिव लेयर रहिबो ऑफ योर lava and ash then that is called as your composite volcanoes ठीक अछि तो हमें एक्सट्रूसिव volcanoes देखि देले इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म वोल्केनिज्म रो आउ कोन इंपोर्टेंट देखिले एसिडिक लावा बेसिक लावा राइट तो एई दीटा जिंस मो हिसाब रे सबुठी इंपोर्टेंट जोटा की आसी पारे आपनकर वोल्केनो राइट आउ किछि वोल्केनिक मटेरियल देखिया वोल्केनिक मटेरियल मींस when there is volcanism some material come out of it lava आसे राइट लावा बाहर को आसे लावा फ्लो ता संगे रे किछि किछि आउ स्ट्रक्चर से माने फॉर्म करन
ठीक अछि स्ट्रक्चर्स और लैंडफॉर्म्स हम फॉर्म करंती कि किछि रॉक्स एक्सेट्रा बाहर को आसे हमें एबे सेटा देखिबा फर्स्ट इज योर स्कोरिया कोण स्कोरिया किछि नै किंतु जेतो बेले राम सेतु बना होतला श्रीलंका जीवा पई सेतो केमति सान जाइथिले को फ्लाइट रे Sir, यस ask the question. अंकल जेतो बेले राम सेतु बनौथिले लंका जीवा पई सेतो सान केमति जाइथिले ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସିକି ଯାଇଥିଲେ। हनुमान को कांधे रे बसी थोड़ी ना जाइथिले ରାମ ସେତୁ ଉପରେ ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲେ। हाँ तो से जो पत्थर जो पक्का ହେଇଥିଲା रामଙ୍କ ना लेखा है सेटा कोन थला सेटा स्कोरिया थिला ओके से जो पत्थर रामଙ୍କ ना लेखा ହେଇଥିଲା तापर पत्थर फ्लोट करिया स्टार्ट कला सेटा कोन थला सेटा स्कोरिया थिला ठीक अछि स्कोरिया टा कोन एटा हला बबल फिल्ड स्टोन्स इजेक्टेड फ्रॉम वोल्केनो बबल्स थिबो लेट्स से दिस इज अ स्टोन सेथिरे कोन हबो छोटो छोटो एमतिया पोर्स थिबो जा भीतर बबल्स थिबो ठीक अछि पोर्स थिबो बबल सेथिरे बबल्स थिबो ताले कोन हबो एई जो रॉक टा आर डेंसिटी टा कम ही जीवो कि नहीं ए जो रॉक टा तार डेंसिटी कम ही जीवो Yes, कि sir. नहीं एयर रहउची राइट सेथि पई ए जो रॉक टा ये कोन करे ये फ्लोट करे पानी ऊपर ठीक अछि ए रॉक फ्लोट करे पानी ऊपर ये बुडेनी राइट सो दिस इज नथिंग बट ए स्कोरिया व्हाट इज इट इज अ बबल filled stones ejected from a volcano the pores makes it of low density and it floats on water okay that is your scoria तापरे आ टा कोन इट इज नथिंग बट थिक फैट एंड शॉर्ट लावा फॉर्मेशन ठीक अछि थिक फैट एंड शॉर्ट लावा फॉर्मेशन एटा एटा जो देखचंदी दिस इज योर आ ओके थिक फैट एंड शॉर्ट लावा फॉर्मेशन तापरे गोटे अछि पा होई कोन एटा किछि न आपण समस्त क्षीर पिउथिबे जेतल क्षीर आपण बसांती गैस ऊपर गरम हेइथाय ता ऊपर जेतले बंद करंती ता ऊपर जेतले कवर न देन ता ऊपर कोन होवे उत्तरी जाए. ଛାଲ ଟାଇପ ର ପଡିଯାଏ। हाँ छाल टाइप नहीं उतरियो गैस बंद कला पर कहीं उतरियो ये जे भी कहले से जमा रोसई घर को पसंद नहीं जणा पड़छ गैस बंद कले कहीं क्षीर उतरियो गैस बंद कला पर जेतले क्षीर गरम थाए ता ऊपर कोन होबो सरटा पड़े राइट तो पा होई किछि ने बट सेही जिंस देखंतु एठी देखंतु एटा कोन हेइ हम कहूची हमरो लेट्स से वोल्केनिज्म हे गला ठीक अछि वोल्केनिज्म हे गला आउ गरम लावाटा बाहर अछि लावाटा एठी बाहर अछि जेतले लावाटा बाहर अछि तो एबे कोन हबो ऊपर पार्टटा ठंडा हबो यस और नो ऊपर पार्टटा ठंडा हबो जेतले ऊपर पार्टटा ठंडा हबो जेमती हमर क्षीर ऊपर गोटे लेयर पड़े राइट एठी भी कोन Yes, हबो sir. गोटे स्किन गोटे आ ऊपर भी गोटे स्किन डे रही जीवो आ सेही स्किन टा रही छि किंतु अंडरनीथ ऊपरटा सिना ठंडा हे गला ऊपरटा कोन हे गला कूल हे गला किंतु तळ पार्टटा स्टिल एबे कोन होतिबो लावा फ्लो होतिबो तळ पार्ट रे स्टिल लावा फ्लो होतिबो जोटा गरम थिबो लावा ऊपरटा ठंडा होछि किंतु तळटा फ्लो होछि तळटा फ्लो होछि ई ऊपर पार्टटा कोन होबो टिके एम्ति रिंकल आस जिवो ऊपर पार्ट रे टिके रिंकल आस जिवो काई तळ पार्टटा जो फ्लो होछि आकु टिके टाणी नउथिबो ठीक अछि तो ऊपर पार्ट रे कोन होबो हल्का हल्का रिंकल्स फॉर्म हे जिवो ठीक अछि सेही स्ट्रक्चर टाकू आमे कोन कहू फा होई होई सेही फॉर्मेशन टाकू फा होई होई कहू एठी देखंतु एईटा जानि परिबे ए ऊपरटा एई पार्टटा कोन हेछि एई पार्टटा आपण ठंडा हे जाइछि किंतु तळे कोन हेछि लावा फ्लोटा चालिछि सेथि पई ये कोन होछि ऊपरटा एम्ति जाकी जाकी हे जाउछि लावाटा लेट से एपटू फ्लो होछि ये कोन होछि एम्ति जाकी 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 हे जाइछि ओके बुझा हला ए पार्टटा फा होई होई Yes, sir. तो स्कोरिया आ पा होई होई ओके जदि आपण लैंडफॉर्म लिखुचंती एटा भी लिखि परिबे कि स्कोरिया टा लैंडफॉर्म रे लिखि परिबेनी वोल्केनिक मटेरियल लिखि परिबे किंतु आ और पा होई होई आपण लिखि परिबे कि अनइवन थिक फैट लावा फॉर्मेशन एम्ति जो गोटे प्लेन रे रहइबो सेडो आ कहू पा होई होई कहि परिबे
तापर आउ दुटा वोल्कानिक मटेरियल आमे पढिया गोटे हला वोल्कानिक बम कोन जेतबेले हमर इरप्शन हबो जेतबेले इरप्शन हबो समटाइम्स जो कहली जो वायलेंट इरप्शन होउची ओके सेठी बहुत अधिका हमर जेतबेले फिशर टाइप होउची सेठी कोन होउची बहुत हमर लावाटा बहुत अधिका विस्कस हुए कोठी जोठी हमर फिशर टाइप इरप्शन हुए किंतु कोनिकल टाइप रे हमर लावाटा बहुत अधिका विस्कस थाए राइट विस्कस थाए किंतु सील्ड वोल्केनोज रे फिशर टाइप रे लावाटा कम विस्कस थाए जोठी अधिका विस्कस थिबो सेठी कोन होबो लावाटा जो अछि सेटा हमर बाहरिया पे कष्ट हुए राइट सिमिलरली सेही टाइम रे कोन होबो किछि पेबल्स जोटा पूरा बंद है कि लावा है नथिबो से पेबल्स भी एक्सप्लोजन रे बाहर को बाहरे ठीक अछि पेबल्स भी एक्सप्लोजन रे बाहर को बाहरे सेही पेबल्स गुडा को हमें कोन को वोल्केनिक बम किछि नहीं खाली पत्थर पत्थर जोटा ता भितरु बाहरी सब तो मेल्ट है कि बाहरीबनी किछि पत्थर भी एक्सप्लोड है कि बाहरियो सेडु को हमें को वोल्केनिक बम इट इज नथिंग बट सॉलिडिफाइड मटेरियल इन फॉर्म्स ऑफ पेबल एटा हला वोल्केनिक बम इजी एगुडा देख बहुत इजी एगुडा खाली ना गुडा मन रख देबे बाकी भीतर किछि नहीं तापर कोन लैपिली कोन कि सेही जिंस किंतु छोट छोट एटी कोन पेबल टिके बड़ साइज एटी कोन छोट साइज वोल्केनिक मटेरियल पीस माने हम मोटर बलिया छोट छोट जिंस जो बाहरिबो से दैट इज नोन एज लैपिली ओके क्लियर ए पार्टटा सर टिके डाउट माने विस्कस अधिक थिले सेटा अधिक इरप्ट हबो हां जेतले गोटे जिंस विस्कस माने कोन से जिंसटा आपनकर तार फ्लूइडिटी ता फ्लूइडिटीटा बहुत कम जोटा अधिक विस्कस माने सीए बहुत अधिका थिक माने एग्जांपल देबी हनी आ वाटर हनीटा अधिका विस्कस ठीक अछि आ वाटरटा कम विस्कस बुझी परले आज्ञा सर हां तो जेतले आपन को जेतले पानीटा फ्लो करियो पानीटा कोन इजीली फ्लो होई पळेबो हनीटा फ्लो हबो तो अधिका से माने सेही कांसेप्ट आपन बुझी परिबे तो जेतले विस्कस अधिका थिबो से इजीली फ्लो होउनी ता माने कोन होई से बहुत अधिका जो लावाटा हेई सेटा बहुत अधिका फ्लूइड नुह सिमिलरली जदि बहुत अधिका फ्लूइड नुह से वोल्केनिज्म रे हमर मे भी किछि पेबल्स भी थिबो जोटा कि मेल्ट हेई लावा हेई पूरा पेबल्स थिबो से पेबल्स बाहर को जेतले बाहरे सेटा बम भलिया फाटी की बाहरे साउंड हुए तो सेटा हमर कोन हुए वोल्केनिक बम हमको क्लियर यस सर ओके नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो आ आपन अर्थक्वेक ठीक अछि माने सिमिलर जगह रे हो जेंति कि रिंग ऑफ फायर सेठी हमर सबटो अधिक अर्थक्वेक हुए यस और नो रिंग ऑफ फायर कोडा मु देखै थिली भी अर्थक्वेक करला पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यस तो जापान यस जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अछि सेठी सबुठु जोटा को सर्कम पैसिफिक बेल्ट हम को सेठी कोन अछि सबुठु अधिका हमर वोल्केनिज्म देखिया को मिले मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड वोल्केनो माने मोर देन 50% सेठी देखिया को मिले ठीक अछि सेठी कोन हुए द पैसिफिक प्लेट सबडक्ट्स बिलो द यूरेशियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नास्का प्लेट से जगह रे अछि जोटा कि साउथ अमेरिकन प्लेट बिलो रे साउथ अमेरिका प्लेट तळ को सबडक्ट करछि ओके सो दैट इज द पार्ट वेयर वी एक्सपीरियंस द मोस्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोल्केनोस तापरे आपनकर आसला मिड ओशनिक बेल्ट ओके मिड ओशनिक बेल्ट तो मिड ओशनिक बेल्ट रे आपनकर मिड ओशनिक बेल्ट रे कोन मिड ओशनिक बेल्टटा कोठी जोडा जेमते एबे हम कथा होथिले कि मिड अटलांटिक ओशन रे ठीक अछि जो मिड ओशनिक बेल्ट जो मिड ओशनिक रीज अछि हमर जोडी अटलांटिक एटा म अर्थक्वेक बेले सब डायग्राम देखैतली आपन सेटा को फॉलो माने रेफर करि परिबे हमर जो अटलांटिक ओशन अछि ता मझी रे हमें जानि छै कि सेठी कोन हुए सेठी हमर सेठी सी फ्लोर स्प्रेडिंग से स्टार्ट हुए राइट तो सेही जगह रे हमर कोन अछि डाइवर्जेंट प्लेट अछि लेट्स से एटा आपनकर अटलांटिक फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज अटलांटिक तो ई जो मझी रे अटलांटिक ओशन रो ई जो मझी पार्ट रे एटी कोन हुए डाइवर्जेंट डाइवर्ज करे प्लेट आ एटी कोन हुए वोल्केनिज्म हुए राइट ए जगह वोल्केनिज्म स्प्रेड हुए मिड ओशनिक रीज एठी अछि एटी मिड ओशनिक रीज अछि ए एरिया राइट तो एटा आपनकर सेकंड बेल्ट जोटी की बहुत अधिका हमर वोल्केनिज्म देखिया को मिले एटी कोन डाइवर्जेंट प्लेट अछि आ साइलेंट फिशर टाइप मु कहितली जोटी आपनकर सबडक्ट करूची प्लेट जोटी प्लेट सबडक्ट करची कन्वर्जेंट बाउंड्री सेठी कोन होबा आपनकर एक्सप्लोसिव वोल्केनोज होबो कोनिकल हिल्स होबो किंतु जोटी डाइवर्ज करची सेठी कोन होबा आपनकर
फिशर टाइप हबो आ गुटे कोन हॉटस्पॉट्स गुडा कोन एनीवन व्हाट इज हॉटस्पॉट सर प्लेट मझिरु इरप्शन हो हाँ प्लेट मझिरु इरप्शन हबो हॉटस्पॉट टा जनरली कोनडा दिस इज a region in a continental or an oceanic plate which is more heated than the surrounding region से एरिया टा abnormally बहुत अधिका heated था than its surrounding region ठीक अछि और सेठी हमहु बहुत अधिका वोल्केनिज्म देखिया को मिले सेटा को प्लेट बाउंड्री रे न थाए सेटा प्लेट रो मझिरे थाए हॉटस्पॉट गुडा हमर प्लेट मझिरे थाए फॉर एग्जांपल मु जो कहिथिली आपन को कि हमर जो डेक्कन प्लेट्यू हेछि सेटा जेतो बळे हमर प्लेट इंडियन प्लेट टा इक्वेटर पाखरु आस्थिला ठीक अछि सेठी हमर कोन हला सेही पाखरे सेठी गोटे हॉटस्पॉट अछि जोठी की हमर कोन हला डेक्कन प्लेट्यू रो डेक्कन प्लेट्यू रो बहुत अधिका वोल्केनिज्म हेतिला ओके रियूनियन आइलैंड पाखरे सेही पाखरे हमर कोन हेतिला सेठी हॉटस्पॉट अछि जोठी की बहुत सेठी पई से एरिया रे जेतले इंडिया प्लेट पास करतला हमर डेक्कन प्लेट्यू फॉर्म हेतिला ओके सो हॉटस्पॉट व्हाट इज इट इंटीरियर ऑफ द प्लेट फर्स्ट टाइम कोन देखिले सर्कम पैसिफिक बेल्ट रे सबरो अधिका हुए एटा कोन एटा प्लेट बाउंड्रीज रे एटा कोडी होची एटा प्लेट बाउंड्रीज रे होची राइट तापरटा हमर कोन मिड ओशनिक बेल्ट एटा भी प्लेट बाउंड्री मिड ओशनिक प्लेट दीटा प्लेट डाइवर्स करचंदी एटा भी प्लेट बाउंड्रीज रे हॉटस्पॉट टा कोन इंटीरियर ऑफ द प्लेट ओके दिस इज अ रीजन ऑफ थिन क्रस्ट एंड हाई टेम्परेचर क्रस्ट टा बहुत थिन था सेति में इजीली लावा टा बाहर को पळे आसे than the surrounding regions okay I think it's clear तापरे mid oceanic belt mid mid continental belt mid oceanic no mid continental belt mid oceanic रो ऊपर पड़ले mid continental belt कोटा आपण देखिथिबे अफ्रीका किछि अधिका ही खराब हो गेला अफ्रीका हमर दिस इज बेटर ठीक अछि एटा अफ्रीका आपनकर हेला हबंती एटा यूरोप है राइट एई एरिया रे हमर कोन अछि मेडिटेरियन सी एई पार्ट ता हमर कोन मेडिटेरियन सी राइट अफ्रीका कोन होछि हमर यूरोप आडू को यूरोप को कन्वर्स करछि अफ्रीकन प्लेट हमर कोन होछि यूरोप को कन्वर्स करछि राइट जे कन्वर्स करछि एबे जो मेडिटेरियन सी आपण देखु नांदी मेडिटेरियन सी दिस वाज पार्ट ऑफ टेथिस सी एटा कोन था टेथिस सी रो पार्ट थिला एबे कोन इंडिया आसे कि पूरा लागी गलानी यूरेशिया रे ठीक अछि सेति में हमको देखा जाउनी किंतु अफ्रीका रो से टाइम ता चाली छि से पूरा आसे कि यूरोप रे लागी गोटे टाइम आसीबो जोडा कि अफ्रीका जाई कि पूरा कोन होबे यूरोप रे ए एरिया रे लागी जिवो तापर तांकर कंटिनेंट जेमति एबे इंडिया और यूरेशिया भीतर कॉन्टिनेंटल चलची कन्वर्जेंस आंकर सेमति होबो किंतु एबे ए जो ओशनिक पार्ट ता अछि ना ए जो पानी पार्ट ता एटा कोन होची एटा सबडक्ट करूची एबे भी धीरे धीरे ठीक अछि सेति पई आपन को जो अफ्रीकन प्लेट कन्वर्ज होची आपन को यूरोपियन एरिया रे मेडिटेरेनियन रो देखिबे आपन बाउंड्रीज रे बहुत अधिका आपन को वोल्केनिज्म मिले इटली रे माउंट एटना वेसुवियस ठीक अछि माउंट वेसुवियस ए सब जिंस ए सब वोल्केनोस काई की होची बिकॉज़ ऑफ दिस मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जोडी की अफ्रीकन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स योर यूरेशियन प्लेट क्लियर yes sir okay fine okay so that was all about your volcanism I guess volcanism बुझाला समस्तन को किछि डाउट अछि कि डाउट अछि कार okay ठीक अछि we'll move to the next topic and that will be our last topic अच्छा ता आगुरु म आपन को गोटे काम करेबी ता आगुरु म आपन गोटे क्वेश्चन करेबी
तापरे लास्ट टॉपिक टा आपन को पढ़ाई देबी आई एम गिविंग यू ऑल अ 5 मिनिट्स ब्रेक तापरे हमें लास्ट टॉपिक टा स्टार्ट कर दबा आउ गोटे कथा हम कहि देबी कि मु लास्ट टाइम पढ़ितली इंडस्ट्रीज पढ़ितली ता नोट्स देइनी ता नोट्स टा मु काली बिफोर 12 o'clock आपन को मिल जिवो ठीक अछि आउ आजिरो सब नोट्स आज ही शेयर कर देबी ठीक अछि हम 5 मिनिट्स ब्रेक नबा तापरे विल मीट
Okay, so shall we start? Yes, sir. Okay. Screen is visible? Screen देखा होती है समझो? Yes, sir. Okay, fine. So let's discuss a question. See, again, my aim in this question is not to give you content. ठीक है a question कारण this is the last question that I will be discussing with you before your exams. मतलब more class सॉल्व. So again, from the first day itself and the first question itself, my aim was never to give you content in answer writing. Content तो class रे जा पढ़ा उसे दिया होती. My aim is always to help you derive more points and to analyze the question in different dimensions so that you can generate more points in less time. खाली पॉइंट जनरेट भी करले हबनी कम टाइम रे करले हबो आ कम टाइम रे आपण केमति करिवे जेतोले आपण डिफरेंट डायमेंशंस रे भाबिबे कि जेमति फॉर एग्जांपल पेस्टल जेमति गोटे डायमेंशन ला मु ज्योग्राफी रे कहि दिली को हिसाब रे आपण भाबिबे तो सेतोले कोन कम टाइम रे आसीबे राइट. सो द एम ऑफ दिस क्वेश्चन इज आल्सो दैट इट इज नॉट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कंटेंट or I am not going to give you content, but the approach that you need to have in the exam. Okay. So this is your question I am writing here. So this is your question. Discuss the impact of volcanic eruptions on regional environment. ठीक अछि. Again, introduction में आपन पे छाड़ दूची. आपण सेटा निजे बनै देबे इंट्रोडक्शन. आपण इंट्रोडक्शन खाली कहि दियंतु इंट्रोडक्शन रे कोन एठी लिखि पारे जे भी कहया चाहछन्ती. Sir, volcanic eruption ର definition ଟା ଆମେ ଲେଖି ପାରିବା. ठीक अछि. Good. You can write the definition of volcanic eruptions. आउ मु सबले कहबी ना बहुत अधिका इनोवेटिव देखंतु जदि आगुरु इनोवेटिव आपण एग्जाम रे जाके हेई परिबेनी. इनोवेशन की किछि स्पेसिफिक पॉइंट एक्सेट्रा आपण जदि आगुरु किछि प्रिपेयर करछनी सेटा आपण एग्जाम रे जाके लिखि परिबे. तो जदि परीक्षा आपण पर किछि इंट्रोडक्शन नाही तो आपण सेठी बहुत अधिका इनोवेटिव हवा कि ट्राई करिवेनी बहुत टाइम पळेबो. डायरेक्ट कोन करी जहा कीवर्ड अछि ताकू डिफाइन कर देबे दि तीन लाइन रे तापर आगु पळेबे. जदि हां किछि अछि डाटा फैक्ट वगैरह ताले आपण को हिसाब रे भलो इंट्रोडक्शन लिखि परिबे. अदरवाइज let's be just average or above average in the introduction by writing the definition to the keywords. Okay. हां तापर बॉडी रे कोन लिखिया कोन करिया कोन बॉडी रे सर जेहेतु एटा रीजनल एनवायरनमेंट ऊपर पचारछि ताले डिफरेंट एनवायरनमेंट फैक्टर्स ऊपर कोन इंपैक्ट होयो. ठीक अछि कोन एयर वाटर
Okay. For example, it will impact the air pollution by releasing ash and debris. Okay. ঠিক আছে। Similarly, it will contaminate the local water sources. Okay. ঠিক Then আছে। soil. ঠিক আছে, soil ରେ କଣ ହବ? Soil, sir, we can write that due to the coverage by lava, so the soil fertility and the upper layer of the soil is impacted, reduced fertility, Reduce and may not be fertility, suit. okay। ठीक ଅଛି, long term ରେ फायदा भी ହେଇପାରିବ। हाँ, immediately Yeah. ଆପଣଙ୍କ soil fertility ଖରାପ ହେଇଯିବ। Black ଠିକ soil ଅଛି। जोटा नहीं। हाँ, long term ରେ ସେଇଟା ହବ। long term ରେ ଆମର black soil ଆସିଯିବ। हाँ, କଣ ହବ? ଆଉ କଣ? Second factor is like insolation. It the extracts from the volcano will limit the insolation, so it will impact the local vegetation as well, vegetation and agriculture. Okay, very good. And vegetation, agriculture, so biodiversity will also be impacted. Okay. What else? It will increase the global temperature. It will increase the global temperature. Regional temperature, let's say regional temperature, not global temperature. ठीक ଅଛି, okay. Sir, there are some instances where it has actually reduced the temperature. Yes, that is because Yes. of this ash and dust particles एथुर कोन होबो आपनकर penetration माने sunlight penetrate करि परियोनी। Okay, so सेति पई आपनकर कोन होबो cooling effect हे जाई पारे। Yes, sir. This is what you are saying? Yes. Okay, Sir, yes. global warming का मैं out a point लिख पर है, but माने regional cooling effect पर a certain period हम लिख पर। Yes, yes. Global warming रो आ गोटे पॉइंट हे परियो जोटा कि आपनकर greenhouse gases जोटा। Yes, greenhouse gases जो हमरो रिलीज होची सेइथुर कोन हे परियो सल्फर डाइऑक्साइड आपनकर बाहरची, राइट? तो एटा नाइट्रस ऑक्साइड बाहरची। These are greenhouse. acid rain भी मिलते हैं। Yes, yes, and that also may lead to your acid rain. Okay, आउ का पैकेज पॉइंट अछि? So regional environment will also contain the social environment. In that case, like any violent volcano will also cause the local population to migrate from the place. Yes, हाँ ठीक अछि। बायोडायवर्सिटी इम्पैक्ट होबो गोटे। तापरे लोकल पॉपुलेशन इम्पैक्ट होबो। Yes, fine. Okay. So सर उतरे landform formation हम लिख पर है कि the Deccan Plateau form है जी flood basalt। Yes, आपण लिखि परिवे कि लैंडफॉर्म मॉडिफिकेशन आपण लिखि परिवे। एटा आपण लिखि परिवे फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यू सील्स एटा भी लिखि हो। ओके, आउ का पे किछ अछि? ओके, सो सी एटा जेतले क्वेश्चन आछि, क्वेश्चन कोन आछि कि वोल्केनिज्म रो इंपैक्ट कोन होछि रीजनल एनवायरनमेंट रे। ठीक है, हम पाखे दीटा कीवर्ड गोटे अछि, गोटे तो वोल्केनिज्म आ गोटे कोन अछि एनवायरनमेंट, गोटे रीजनल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आसीबा माने हम माइंड रे कोन आसीजो संगे संगे लैंड, सी, सॉरी लैंड, वाटर, एयर। मु एमती कहने दात बाप का दादा का भाई माने एनवायरनमेंट आसीले बहुत इजी आंसर ले काहे कि ताकू एते पॉइंट मिल जाए, एथु एते पॉइंट मिल जाए, सेतम सोले के बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेगा माने जोडी तमरा आंसर आसनो थियो एनवायरनमेंट क्वेश्चन देखले खुशी लागे जे। ओके, तो आपण एई तीनटा पॉइंट रे इठी हमें गोटे सेग्रीगेट कर परिया। तापरे वोल्केनिज्म पाकु आसिया। वोल्केनिज्म रे हमें केमति भाबिया कि कोन होउची जोथि पई कि हमर इंपैक्ट होबो। ऑब्वियसली वोल्केनिज्म रे कोन होउची जोथि पे इंपैक्ट होबो, वोल्केनिज्म टू अर्थ इंटीरियर रु अर्थ सरफेस को किछि जिंसो आछि ता पई हमर इंपैक्ट होबो, राइट? आ अर्थ सरफेस को जो जिंसो आछि सेटा मु आपन को जेतले पढै थिलि ऊपर कि किछि मटेरियल आछि कि जहा हमर वोल्केनिक इरप्शंस जो होउची सेटा को टाइप रो मटेरियल आछि सेथरे मु आपन को एस गैसेस एक्सेट्रा कहि थिलि, राइट? गैसेस रे मु आपन को कहि थिलि कि CO2 एक्सेप्ट सॉरी हां CO2 तो बाहरी होई SO2 NOx
मिथेन ए सब मु आपन कहितली CH4 ए सब मु आपन कहितली राइट तो आपन को एबे कोन करे अछि आपन को एई जिंस को धरे अछि ए लाभा बाहरिबो एटसेट्रा सब तो बाहरिबो तो आपन को एई दीटा जिंस को आपन को एबे कंबाइन करे अछि तो आमे जति टिके आउ एटा एग्जाम रे हेई परिबोनी आ मु एटा कहूनी कि एटा गोटे दिन रे भी के डेवलप कर दे बट आमे जेतोले आगुरु किछि किछि लेट से आपन को गोटे पेपर 20 टा क्वेश्चन आछि जति आपन घरे जेतोले प्रैक्टिस करछन सेतोले 10-12 टा क्वेश्चन भी भाबंतु आपन एमते प्रैक्टिस करूछंती कि आपन एग्जाम जिबा आगुरु 100 टा क्वेश्चन लिखुछंती जोटा कि कम आटो अधिका लिखिया होता लेट से 100 टा क्वेश्चन लिखुछंती किंतु सेही आ से 100 टा क्वेश्चन हिसाब रे आपन भाबुछंती माने आपन सब कीवर्ड केते डायमेंशन कोन हेइ पर आपन भाबुछंती तो सेहीटा ऑटोमेटिकली आपन अलगा क्वेश्चन पे भी करि परिबे एग्जाम एटा जे कि एग्जाम रे हेइ परिबन तो एठी अपन कोन करी अपन देखबे कि अच्छा लैंड वाटर एयर लेट्स डिस्कस अबाउट एयर फर्स्ट एयर डिस्कस करिवे ठीक अछि एयर रे कोन होउची हमें जानि छै कि अच्छा एठी कोन होला गैसेस बाहरची आ गैसेस रे हमर कोन अछि SO2 CO2 एसो बाहरची राइट तो हमें जानले कि अच्छा ग्रीन हाउस गैसेस एटा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होबो आउ ग्लोबल वार्मिंग हे परियो राइट ग्रीन हाउस इफेक्ट आउ ग्लोबल वार्मिंग हे परियो राइट तापरे आउ कोन हे परियो कि हमें आ गोटे जिंस जानले कि एठी एस कंटेंट सॉरी एठी हमरा एस कंटेंट रहउची ठीक अछि डस्ट एक्सेप्टर रहइबो तो एथुरु कोन होबो एयर पोल्यूशन होबो आपण माने एटा आई गेस समझ जानथु कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ता अलगा जिंस होबो एयर पोल्यूशन ता अलगा जिंस होबो राइट क्लियर ना एवरीवन Yes, sir. तापरे आउ कोन हे परिबो एठी हमरो आगो एस बाहरची सेथुरु एटा हमरो सॉरी एटा हमें कनेक्ट करछे एस बाहरला गैस बाहरला राइट तो एथुरु हमर कोन होला ग्रीन हाउस गैस बाहरी गला आपनकर आउ एयर पोल्यूशन हे गला अबिका आउ कोन हे परिबो कि ए जो एस बाहरची जेमती आई गेस अंशुमन कहउतले जो एस बाहरची सेथुरु कोन होबो हमें जानि छे कि जेतो बेले डस्ट पार्टिकल्स अधिका रहिबो सेतो कोन भी इंसुलेशन होबोनी माने होबोनी इन द सेंस कम होबो मे रिफ्लेक्ट कर जियो रिफ्रैक्ट कर जियो डायरेक्ट रेस पडिबोनी तो कोन होबो आपनकर किछि कूलिंग इफेक्ट आपण कोन होबो किछि कूलिंग इफेक्ट हबो फॉर अ टेम्परेरी पीरियड आपण कोन होबो कूलिंग इफेक्ट होबो तार वर्षा आइ गले एटा कमी जिवो बट टेम्परेरी पीरियड पे आपनकर कोन होबो कूलिंग इफेक्ट होबो बिकॉज़ ऑफ दिस एस ठीक अछि आ पे आपनकर कोन होछि कूलिंग इफेक्ट होछि आउ कोन होई परिबो एस पे सर एसिड रे नहीं परियो यस जस्ट अ आपनकर गैसेस पे एसिड रे नहीं परिबो SO2 NOx आ पे आपनकर एसिड रे नहीं परिबो आउ एस पे कोन होई परिबो आपन विजिबिलिटी कमी जिवो विजिबिलिटी कोन होबा आपनकर कमी जिवो सी आमे एटी किछि करने आमे एटी किछि स्पेशल करने आमे कोन करछे एई जिंसटा को नेई की आमे एयर संगरे सॉरी एनवायरनमेंट हां एटा एयर भाबी परिबे एयर संगरे आमे नेई की ताकू कनेक्ट करी की ग्रीन हाउस और एटा तो इजीली समझते ही आपण इजीली कर देबे किंतु ता पर जदी टिके ज्योग्राफी हां कोन हला एठी पोल्यूशन हे गला पोल्यूशन हेले कोन हबो आपनकर कूलिंग इफेक्ट के हे गला कि आपनकर एसिड रेन हे गला कि विजिबिलिटी कम गला तो आमे सेही काम करछे किछि करने सेही थ्रू आपनकर 5टा पॉइंट बाहरी गलानी ठीक अछि अब आपनको एग्जाम रे आठो अधिका माने 10 मार्क क्वेश्चन आसला आप 7-8टा पॉइंट रो अधिका आपन लिखि भी परिबेनी कि लिखिया कथा भी न टाइम पे राइट तो एटा कोन हे गला हमरो एयर रिलेटेड जिंस किछि हे गला तापर लेट्स हमें लैंड रिलेटेड जिंस भाबिया लैंड कोन होबो सॉइल पोल्यूशन होबो फर्स्ट लॉन्ग टर्म रे आपनकर सॉइल फर्टिलिटी बढ़ी जिवो फॉर एग्जांपल आपन ब्लैक सॉइल लिखि दे परिबे ठीक है गला एटा हे गला तापरे आउ कोन होबो लैंड रे जदी हम देखछे वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हे जिवो राइट हमर से एरिया रे कोन होबो जो वेजिटेशन अछि डिस्ट्रॉय हे जिवो क्रॉप्स डैमेज हे जिवो आउ गुटे जिंस होबो जतो बडे हमर एस सरिका जाय कि डिपॉजिट कर होबो लीव्स ऊपर राइट जतो लीव्स ऊपर डिपॉजिट होबो ताले कोन होबो सर फोटोसिंथेसिस कमी जिवो यस जतो एस डिपॉजिट होबो लीव्स ऊपर हमर कोन होबो फोटोसिंथेसिस कमी जिवो
प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस कमिले प्रोडक्टिविटी कमिला राइट वेजिटेशन तो लिखिछ आ संगे बायोडायवर्सिटी भी लिखि दे परियो राइट एटा आपनकर आपण लैंड संगे लिंक करिकि किछि पॉइंट काढले हां एठी आ गुटे जिंस हेई परियो रेनफॉल एसिड रेन लिखा हिची एसिड रेन टा एठी रेनफॉल भी बढ़ी जाई पारे एठी रेनफॉल भी बढ़ी जिवो रेनफॉल काई बढ़ी जिवो कारण कंडेंसेशन न्यूक्लियस बढ़ी जिवो यस और नो कंडेंसेशन न्यूक्लियस Yes, sir. तो Yes, सेथुरु sir. कोन आपनकर रेनफॉल भी बढ़ी जाई पारे राइट तापरे आउ कोन रहला हमर वाटर वाटर कोन हो वाटर पोल्यूशन हो टेम्परेचर बढ़ी जाई पारे सेथुरु कोन हो एक्वाटिक एनिमल्स टेम्परेचर बढ़ले कोन हो ऑक्सीजन जो डिसॉल्व ऑक्सीजन आपनकर कमी जिवो राइट O2 आपनकर कमी जिवो तो सेथुरु कमी गले एक्वाटिक एनिमल्स आपनकर ये जिवो रीजनल कोइ पॉइंट बॉन्ड अछि ये अछि से सब रे माने एटा बहुत अधिक इंपैक्ट होबो किनु कहूची कि एई हिसाब रे हमें कोन कर परिया पॉइंट जनरेट कर परिया राइट बुझी पारले समस्या आउ किछि पॉइंट अछि कि किछि मिस कली का किछि सेंट लागुची आई Sir, थिंक यार हमें visibility issue गोटे कर परिया हां विजिबिलिटी में visibility. लिखि छि बोथे आई गेस हां एठी लिखि छि विजिबिलिटी एटा Okay. ओके तो एई हिसाब रे अपन पॉइंट जनरेट कर चेष्टा कर जोठी भी देखिबे एनवायरनमेंट अछि मु कहू जे एनवायरनमेंट ने बाप पे दादा भाई एठी ही बदलाव हबार अछि राइट एठी गोटे मार्क एक्स्ट्रा अपन हबार ही अछि एनवायरनमेंट हे गला कि सोसाइटी क्वेश्चन ए सब क्वेश्चन रे अपन को पाखरे पॉइंट इजीली अपन जनरेट कर परिबे कारण एठी बहुत डायमेंशन आपन मिल जिवो ओके सो दैट वाज अ क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू डिस्कस next let's move to the last topic that is your tribals okay that is your tribals in Odisha the tribals in Odisha eta apanकर Odisha society ro part रे आस जिवो मु आपनकर खाली जे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कहि देबी आउ चलो स्टार्ट करिया तो ट्राइबल्स कोन तांको आदिवासी कोंदी राइट ट्राइबल्स को हमें आदिवासी भी कहू आउ एटा बहुत फैक्चुअल एथर किछ बुझेबार नै तो मु आपन फैक्ट्स ही दउची एठी तो हमरो ओडिसा रे जो ट्राइबल पॉपुलेशन अछंती तांकर कंपोजिशन ला 22% पॉपुलेशन शेयर हैला 22% ठीक अछि आउ हम कंट्री रे जति कि ट्राइबल अछंती तार 9.7% ट्राइबल ओडिसा रे अछंती ठीक अछि हम कंट्री रे जति अछंती तार अप्रोक्सीमेटली 9 to 10% ट्राइबल्स ओडिसा रे कंट्री रे जति कि ट्राइबल अछंती ओडिसा रे 9 to 10% अछंती सो obviously this shows that a large population in India in Odisha comprises of tribals okay तो केते ट्राइबल ग्रुप्स अछंती 62 ट्राइबल ग्रुप्स अछंती ओडिसा रे ओके 62 ट्राइबल ग्रुप्स ओडिसा रे अछंती आउ ए जो ट्राइबल ग्रुप ओडिसा रे अछंती ता भितरे आपनकर पीवीटीजीज आपनकर 13 पीवीटीजीज अछंती ओके व्हाट इज पीवीटीजीज particularly vulnerable tribal communities ठीक अछि ए जो पीवीटीजीज ए माने कोठू माने पीवीटीजी स्पेसिफिकली ए ग्रुप आसिले कोठू मींस आंको क्लासिफिकेशन कोठू आसिला देवर कमिशन गोटे बसितला इन 1970s से कमिशन ट्राइबल्स को भितरे भी किछि ट्राइबल पीपल थिले जो माने कि दे वर लेस डेवलप्ड अमंग द ट्राइबल ग्रुप को भितरे भी जे पुअर ऑफ द पुअर जेंति हम कहू सोसाइटी रे पुअर ऑफ द पुअर सेंति ट्राइबल्स को भितरे जे सबुठू लीस्ट डेवलप थिले सेमानंकु देवर कमिशन कहले कि तांकु हमें पीवीटीजीज रे रखिया पे ओके पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटीज ओके तो ओडिसा रे पीवीटीजीज 13टा ग्रुप अछंती ठीक अछि 13टा ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम द 62 आर पीवीटीजीज सो नेक्स्ट हम तो देखिले कि ट्राइबल कोन अछंती केते अछंती ओडिसा तो क्राइटेरिया कोन एनीवन अपन कहि परिबे क्राइटेरिया कोन
ट्राइबल्स को क्लासिफाई करियार केमती क्लासिफाई करा हुए कि केमती तांको शेड्यूल ट्राइब्स रो स्टेटस दिया हुए ओके हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रे Sir, आर्टिकल 366 कहू जी कि such tribes or communities are called scheduled tribes that are mentioned through article 342 okay कौन कहली ट्राइबल जो scheduled tribes it is defined under article 366 कौन कहूची such tribes or communities that are deemed under article 342 to be scheduled tribes and 366 कहूची कि से tribes आमर scheduled tribes हेबे जो मानंगो कि आर्टिकल 342 हिसाब रे scheduled tribe हुआ होची आर्टिकल 342 रे प्रेसिडेंट आपनकर डिक्लेयर करंती कि scheduled tribes किए ओके आउ scheduled tribes किए सेमति किछि स्पेसिफिक क्राइटेरिया नाही हम पत्रे किछि स्पेसिफिक क्राइटेरिया नाही को बेसिस रे हमें scheduled tribe काहको कहबा ओके को बेसिस रे काहको हमें scheduled tribe कहबा सेटा हम पत्रे किछि स्पेसिफिक क्राइटेरिया नाही बट some of the traits that are seen or some of the criteria that is largely understood that such criteria are taken to classify a community as scheduled tribe kichi largely kichi criteria ame बुझी पारू those are your primitive traits माने किछि ट्रेडिशनल ट्रेट्स जार अछि बहुत पुराना वे रे जो माने रहू चंदी ठीक अछि ट्रेडिशनल वे रे जो माने रहू चंदी if we find such traits that may be a criteria for declaring someone scheduled tribe खाली से गोटे क्राइटेरिया होबन बहुत गुटे क्राइटेरिया ओवरऑल देखा जाए किंतु ई क्राइटेरिया कोड मेंशन नहीं किंतु we see that such criteria are considered before classifying someone as scheduled tribe कोन गोटे primitive trait आउ distinctive culture ता कल्चर किछ अलगा थिबो जोटा जनरल मेजॉरिटी कल्चर जोटा से कल्चर भलिया तांको कल्चर नो ज्योग्राफिकल आइसोलेटेड है कि रहउतबे जंगल रे जेंदि रहंदी कि बहुत कोई हिली रीजन रे रहउचंदी जोटा कि नॉर्मल आपनकर प्लेन रीजन रु बहुत कट आउट माने कट ऑफ है कि अछि सेही सेमते लोकन को भी करी हो क्लासिफाई अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स तापर साइनेस ऑफ कांटेक्ट विथ द कम्युनिटी एट लार्ज तो हमरो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी अछि कि जो मेजॉरिटी मास अछि से मास संगरे से माने कांटेक्ट करिया पे इच्छा करंदे सच एज अंडमान ट्राइब्स आई मीन से जदी आपण एग्जैक्टली मते मन पड़नी को ट्राइब किंतु जदी आपण तांको लैंड को जिवे अंडमान को आइलैंड मते मन पड़नी सेठी की जदी जिवे से आपण मार देबे हां के सेंटिलिस यस सेंटिलिस से माने मार दियंदी बोधे ऑस्ट्रेलिया की कोड गोटे लोकटे आसला से कहला हम जाई सेठी जीबी तो ताकू साने मार देले राइट तो सेमती आउ बैकवर्डनेस okay so these are some of the specific criteria through which you decide to give a particular community the status of scheduled tribes okay so now let's discuss some of the major tribal groups of Odisha. First is your Bonda tribe. ठीक अछि बोंडा ट्राइब जो बोंडा ट्राइब एमाने कोठी अधिक देखिया को मिलंदी एमन देखिया को मिलंदी आपनकर मालकानगिरी रे ओके मालकानगिरी एंड some other parts of southwest Odisha Malkangiri and some other parts of your southwest Odisha these are some of the places where this Bonda tribe is seen आउ आंकर इकोनॉमी occupation or their source of income कोन शिफ्टिंग कल्टीवेशन आउ आपको आउ कोन कोंदे ओडिया रे पोडू चाष
ठीक अच्छे शिफ्टिंग कल्टिवेशन और पोडू चाष समस्त जानी शिफ्टिंग कल्टिवेशन कौन Yes, sir. ओके एमती किए अच्छा जे जानी न शिफ्टिंग कल्टिवेशन ओके फाइन देन कोन ट्राइब कंध भी कहते ओके so this Kon tribe they are the largest tribal community in Odisha emane largest tribal community in Odisha they are the largest tribal community in Odisha and ankara population is just a second टिपिकल चार्ज बसी दोची but just a second okay am I audible Yes, sir. okay so Konda tribe emane mu kon kali largest tribal community au ankara जो population अछि it's around 1 million or 10 lakhs okay 10 लाख कोन ट्राइब अछंती ओडिसा रे आउ आंकर इकोनॉमी और ऑक्युपेशन आंकर ऑक्युपेशन कोन हंटिंग गैदरिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन ओके हाँ मु गोटे कथा कहबी आपण एबे देखिबे बहुत ट्राइब्स कोन शिफ्टिंग कल्टीवेशन अछि ओके तो आपण जोट देखिबे कि आपण पाखे शिफ्टिंग कल्टीवेशन छडा भी किछि लेखियार अछि माने अछि आपण पाखे सेही ट्राइब रे आपण सेही जिंसटा लिखंदु शिफ्टिंग कल्टीवेशन लिखंदु काहे कि मु कहूची जदि आपण भाबंतु परीक्षा रे आसीगला कि ट्राइब्स कोंतु आ कोडी जाने मिलु चंदी कोंतु तले आपण कोन करियो बे सब जगह शिफ्टिंग कल्टीवेशन लिखुनी इवन दो दे प्रैक्टिस दैट किंतु लागियो कि अरे सब थरे शिफ्टिंग कल्टीवेशन लिख तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन छडा आउ किछि भी अछि तले आपण सेही स्पेसिफिक ट्राइब रो सेही जिंस को ट्राई करंदु लिखिया पे ठीक अछि एठी मु आपण को इंफॉर्मेशन पे लिखि दोची बट एग्जाम रे ट्राई करिवे कि कोन ट्राइब पे आपण शिफ्टिंग कल्टीवेशन अवॉइड करि परिवे ठीक अछि हंटिंग गैदरिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन these are some of the हाँ I mean fruit farmers भी okay they are fruit farmers also तो एमाने कोन करंती एई ऑक्युपेशन रखंती आउ एरिया कोठी आने मिलंदी कंध नारु आपण गेस करि परिवे कलाहांडी हाँ कलाहांडी रे भी मिलंती कंधमाଳ बलांगीर रायगड़ा कोरापुट गंजाम आंकर एई ट्राइबल बहुत बड़ रीजन माने बहुत अधिका पॉपुलेशन अछंती तो माने बहुत एरिया रे मिलिबे ठीक अछि आ बाहर जेंति रायगड़ा रे भी मिलि परिबे ठीक अछि आपण जदि को स्पेसिफिक रीजन रे जानि चंदी स्पेसिफिक जाई चंदी कि से रीजन जानि चंदी तो आपण से रीजन भी लिखि परिबे मोस्टली माने मेजरली ए रीजन रे आपणकर मिलि जिवे ओके फाइन सो द नेक्स्ट ट्राइब just a second. गडव ट्राइब ठीक अछि एमाने कोडी मिलंती मालकानगिरी
कलाहांडी, सुंदरगढ़। ओके, आंकर ऑक्युपेशन कौन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज रे लिख दो ठीक। ऑक्युपेशन तांकर कौन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, नेक्स्ट टाइप जुआंग ट्राइब। एमाने कोडी मिलिबे आपनकर? केउंझर, ढेंकानाल। जस्ट अ सेकंड। ओके, आंकर मेन ऑक्युपेशन कौन? हैंडीक्राफ्ट। आंकर हैंडीक्राफ्ट ठीक अछि, बास्केट मेकिंग। नेक्स्ट टाइम आपनकर मुंडा ट्राइब। ओके, आंकर मुंडा ट्राइब कोडी मिलिबे? ऑक्युपेशन कौन? सेही पोडू चाष। आ जदी भाबंतु काहर आपण मन पडुनी, आखि बंद करी पोडू चाष देखिदेबे। काहे कि किछि न होइतले सेटा 90% चांस होछि कि सेटा होउथो, रादर देन आपण खाली छाडिबे ता जगह रे कोन करिवे आपण पोडू चाष लिखिदेबे। ठीक अछि, सो दैट आपणकर खाली जीवन मार्क मिली जिवार चांसेस बहुत अधिका थिबो। ओके, ऑक्युपेशन इज हंटिंग एंड गैदरिंग एंड पोडू चाष। ओके, सो दिस इज योर मुंडा ट्राइब। गोंड लिखी छी नहीं? गोंड लिखी नहीं बोधे, कौन तो अच्छे। ओके सर, हाँ कौन तो? सर ये जो मुंडा ट्राइब टा तो आई थिंक एटा जो बिरसा मुंडाଙ୍କ ସହିତ affiliated ନା ତ ସେଟା ମାଲକାନଗିରି ଗଞ୍ଜାମରେ କେମିତି ଅଛି? ମାନେ आई थिंक ଏଟା ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲାଟୁ ମାନେ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଖାପାଖି ରହିବା କଥା ନା? नहीं सेपट यस बिरसा मुंडाଙ୍କର मुंडा ट्राइब, किंतु एमिति नाही कि मुंडा ट्राइब खाली सेठी थिले, राइट? एटा मयूरभंज रे भी हेई परिबो, मयूरभंज रे भी हेई परिबो एज यू आर सेइंग, किंतु एमिति नुहे कि एटा खाली सेही रीजन रे रहइबो। ओके, जेमति फॉर एग्जांपल जेमति आमे ऊपर कहले कि हो गड़ब ट्राइब हो, गड़ब ट्राइब देखो सुंदरगढ़ रे भी मिलुची, मालकानगिरी रे भी मिलुची, मिलुचंदी से माने। ओके फाइन। ओके सर। गोंड जस्ट अ सेकंड बैक कर दो। ठीक अछि, माने कलाहांडी, कोरापुट, नवरंगपुर से रीजन में मिलिबे। आउ आंकर ऑक्युपेशन इज स्लैश बर्निंग एंड हंटिंग एंड गैदरिंग। स्लैश बर्निंग मींस पोडू चाष। कोया
कोया कोठी मिलती एमाने भी आपनकर मालकानगिरी रे मिलती और दे आर कैटल ब्रीडर्स। तो मुझे कहूँ जार स्पेसिफिक अच्छी किसी अलग ऑक्युपेशन दैन हंटिंग एंड गैदरिंग सेटा को मन रखियो ट्राई करिवे। जो मानकर आउ किछि नाही खाली हंटिंग गैदरिंग सेटा तो सेटा ही देखिवे, कि जार ता बाहर किछि अछि सेटा को आपण ट्राई करिवे लेखिया पय। नेक्स्ट हला लोहाराज। लोहाराज कोठी मिलिबे? हौ मते गोटे कथा कहबे कि लोहाराज मानकर कोन आपण नारु ऑक्युपेशन कोन लागुची कोन हेतिबो? ब्लैकस्मिथ। यस ସାଣ କାମ କରନ୍ତି। हाँ ब्लैकस्मिथ। जदि ब्लैकस्मिथ हेतिबे ताले को रीजन रे मिलिबाटा बेसी चांसेस अछि? ब्लैकस्मिथ माने सुंदरगढ़ आई केउंझर आड़े। यस यस सुंदरगढ़, मयूरभंज, केउंझर, ठीक अछि। ए रीजन रे लोहाराज आपण मिलिबे। हो ये आपनकर कोडी मिलंती केउंझर रे मिलंती, ठीक अछि। आंकर आउ जाजपुर रे भी मिलंती माने एमाने भी आपनकर स्लैश बर्निंग आउ गैदरिंग हंटिंग गैदरिंग। तापर आपनकर संताल। संताल टाइप एमाने भी आपनकर मयूरभंज रे मिलंती, ओके। आ एमाने कैटल ब्रीडर्स एज वेल एज स्लैश बर्निंग, ठीक अछि। सो दीज आर सम आउरी भी ट्राइब अछंती आउरी जेंती सोरुआ ट्राइब जन अछि सीए आपनकर रायगड़ा कोरापुट से रीजन मिलिबे तांकर भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बट मोस्टली आपनकर एई 10-11 टा मेजर ट्राइब आपण अछि माने ओडिसा रे मिलिबो। आउ एईटा आपण पढि देबे। कथा है दिस इज वेरी फैक्चुअल। ऊपर पार्ट टा तो एई पार्ट टा तो पूरा फैक्चुअल जो ट्राइबल आदि केते परसेंट अछंती एईटा टिके मन रख देथियो, कारण ट्राइबल्स ऊपर क्वेश्चन आसी परियो, ठीक अछि। क्वेश्चन आसी परियो, सो एई फैक्ट्स गुडा टिके आपनकर दरकार पड़ियो। नेक्स्ट आपनकर एईटा आपण पॉलिटी रे जानि चंदी, एई पार्ट टा पॉलिटी रे जानि चंदी। आ जदी भी एई पार्ट आपण न जानि चंदी आपण जनरल नॉलेज रे ए पार्ट टा इजीली आपण कहि दे परिबे कि हां प्रिमिटिव कल्चर थिबो, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन थिबो, बैकवर्डनेस थिबो, एतिकी तो आपण कहि देबे, राइट। एंड दीज आर योर सम ऑफ द ट्राइब्स 10 to 11 ट्राइब्स, एतिकी मन रखि देबे। आ परीक्षा पई मो हिसाब रे एतिकी आपणकर काफी, ओके। हां नेक्स्ट आ कहार किछि सेमति डाउट अछि? नॉट रिगार्डिंग दिस टाइप माने खाली एई टॉपिक रिलेटेड नो, एमति ओवरऑल किछि डाउट अछि एग्जाम जिबा गुरु कि किछि भी जिंस आपनकर माइंड रे अछि? यस ओके। एंजाइटी फील होची एग्जाम आगुरु? एंग्जियस फील होची? यस सर। यस सर। ओके। जेतले केही रिप्लाई न कले मते लागला कि केही भी एंग्जियस फील करनांदी, एटा तो केही तो जस्ट सेकंड
ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି କି କେହି ବି କେମିତି anxious feel କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ତ impossible କଥା। So exam ପାଇଁ ଖାଲି students ନୁହେଁ, teacher ମାନେ ବି students ମାନେ ଯୋଉମାନେ students association ସେମାନେ ବି anxious feel କରନ୍ତି କି ଆମ student କେମିତି perform କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ anxiety ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା କହିଦଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଥିରୁ କି ଆପଣ anxiety ଟିକେ କମିବ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ଯେତେ ଜଣ ସିରିୟସଲି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିବେ, ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ anxiety ମାନେ ସମସ୍ତେ anxious ରହୁଥିବେ ଏ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଯଦି anxious ରହୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସିରିୟସଲି ପ୍ରିପେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଜଣେ ପୁରା କୁଲ ଅଛି, ହଁ ମୁଁ ତ ସବୁ କରିଦେବି, ସେମିତି କେହି ନଥିବେ, ରାଇଟ୍। ଆଉ anxious ଆପଣ କାହିଁକି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେବସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନଥାଏ, ରିଭିଜନ ହେଇନଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯଦି ସିରିୟସଲି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଠିକ ଠାକ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ, ଯଦି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ୟାର ଆଉ 15 ଦିନ ଯଦି ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ନା ସେ ଟପିକ ଟାକୁ ଏମିତି ବଢିଆ କରି ଏମିତିଆ କରିକି ନୋଟ୍ସ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ପୁରା ଉଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଏ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ଆଉ 10 ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା, ମୋର ଗୋଟେ ୱିକ୍ ସର୍ଟ ହଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହଉଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବହୁତ ଜଣ କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଥିବ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏକ୍ସାମ ବର୍ଷେ ବି ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ନା, ବର୍ଷେ ପରେ ଆପଣ କହିବେ ଆରେ ୟାର ଆଉ 2 ଦିନ ମିଳିଥିଲେ ନା ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କି ଆଉ 7 ଦିନ ମିଳିଥିଲା ନା ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରହିବ, ସିଲେବସ କେବେ ବି ସରିବନି, ସେତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ସିଲେବସ ଆପଣଙ୍କ ସରୁନି, ଆପଣ ତା ପାଇଁ anxious ଅଛନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହାର ସରୁନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ anxiety ଟୋଟାଲି ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଧା ଟାଇମ ଭାବିକି ପଳଉଛି, ଆରେ ୟାର କଣ ହବ ଏକ୍ସାମ, ମୋର ତ ଏମିତି ମୁଁ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଏତିକି କରିଛି, ଏଇଟା ସେ କରିନି, ସେଇଟା ରହିଯାଇଛି, ସେସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପାଇଁ ପଢା ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, 1% ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ସମସ୍ତେ, ଯେତେ ଜଣ ମେନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି 1-2% ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡି ସମସ୍ତେ ସେମିତି। କାରଣ ଗୋଟେ ଦିଟା ପିଲା ସେଇଟା ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିଟା ସେମିତିଆ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ anxiety ଫିଲ୍ କରନ୍ତିନି, ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ପରଫର୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସେମିତି ଯିଏ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ, ଯିଏ ନାହିଁ, ବାକି 99% କଥା କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପିଟିଟର ବି ସେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ୟାର ମତେ ବହୁତ anxious ଫିଲ୍, ମତେ anxious ଫିଲ୍ ହଉଛି, ମୁଁ ପଢି ପାରୁନି। ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଟିକେ ପଢିଦେବେ କି ହଁ ସିଏ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ରିଲେଟିଭ ଏକ୍ସାମ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମରେ ଟିକେ ପଢିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଠୁ ଆଗେଇ ଯିବି, ରାଇଟ୍। ତ anxious ଫିଲ୍ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତା ପାଇଁ ପଢା ହ୍ୟାମ୍ପର କରନ୍ତୁନି। ସିଲେବସ ସରୁନି ତା ପାଇଁ ପଢା ହ୍ୟାମ୍ପର ମାନେ ତା ପାଇଁ ଅଧିକା ଭାବନ୍ତୁନି, ସିଲେବସ ସରିବନି। କଥା ହେଲା କି ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜକୁ ଯୋଉ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି କି ବ୍ୟାଟେଲ, ଯେତେବେଳେ ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟେଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜିତିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏବେ anxious ହେଇକି କହିବା ଆରେ ୟାର ସେମାନେ ତ 1000 ଜଣ, ଆମେ ତ 100 ଜଣ, ଆମେ କେମିତି କରିବୁ, ଖଣ୍ଡା ପକେଇଦେଲେ, ୱେପନ ଛାଡିଦେଲେ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ଟାଇମ ହେଲା କି ଆପଣ ଗିୟର ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ରାଇଟ୍। 4th ଗିୟର ରୁ 5th ଗିୟର କୁ ଯିବେ, କି 5th ଗିୟର ରୁ 6th ଗିୟର କୁ ଯିବେ, ଆଉ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ। anxious ଇଭେନ ଦୋ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ anxious ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବା କଥା ନୁହେଁ, ଓକେ। ଆଉ ଯେମିତି କହିଲି କି କେବେ ବି ସରିବନି ସିଲେବସ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ କରିବେ ଆପଣ, ସେଇ ଟପିକ୍ସ କୁ ଫର୍ଷ୍ଟ କରିବେ ଯୋଉ ଟପିକ ହେଲା ଯେମିତି ହାଇ yield ଭେରାଇଟି ଟପିକ୍ସ। ହାଇ yield ଭେରାଇଟି ମାନେ ବହୁତ କମ ପଢିକି ବି ସେ ଏରିଆରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ସେମିତିଆ ଟପିକ୍ସ କରିବେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେମିତି ପଲିଟିରେ ଯଦି ହବ, ଯେମିତି ଫେଡରାଲିଜମ ହେଇଗଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଗଲା, PRI ହେଇଗଲା, ପଞ୍ଚାୟती ରାଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଜୁଡିସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଜମ, ଆପଣଙ୍କର ଜୁଡିସିଆଲ ଓଭର ରିଚ୍, ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ପାର୍ଟ ଯାକ କଣ, ଏଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, DPSP, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଆମ୍ବଲ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ପାର୍ଟ ଯାକ କଣ, ଏଇ ପାର୍ଟ ଯାକ ହାଇ yield ଭେରାଇଟି, ମାନେ ଆକୁ ପଢିବେ, ଏଇ ପାର୍ଟ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ, ତ ଏଇ ପାର୍ଟ କୁ ପଢିବେ। ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା 1857 ହେଲା, ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା 1905, ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଖାଲି ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର NCM ହେଲା, NCM କାହିଁକି ହେଲା, କୋଉଥିପାଇଁ, ମାନେ କଣ ମାନେ କଣ ହେଲା, ତାପରେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ କଣ ଥିଲା NCM ର। ସେମିତି CDM କାହିଁକି ହେଲା, କଣ ହେଲା, ତାପରେ କଣ ହେଲା। ତ ଏଇ ଟପିକ ଗୁଡା ହେଲା ହାଇ yield ଭେରାଇଟି। ତ
तो ए सब टॉपिक ऊपर आपन को फोकस करिया दरकार कारण ए टॉपिक रु क्वेश्चन जहाले बसबा आ ए टॉपिक समस्या लिखियो तो आपन को ए टिके भलो लिखियो तो सेटा गोटे जिंस मु कहली आ गोटे जिंस कोन कहली कि मु एग्जाम डे कथा कहूची एग्जाम डे रे ना एमती हेई पारे कि आपण बहुत कॉन्फिडेंट थिबे कि हां मु पढिची कर देबी कि एमती भी हेई पारे आपण बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थिबे कि यार मु रिवाइज कर पारलेनी मते एंशिएंट हिस्ट्री रो मन नै कारण से बहुत रट्टाफाए पार्ट से गुडा तो एई पार्ट ता मोर मन पड़नी कि सेई पार्ट ता मन पड़नी हां सोसाइटी तो हम लिखि देबी किछि ना किछि भाबी कि भलो आंसर मते एई पार्ट ता मन नै सेई पार्ट ता मन नै तो से जिंस ऊपर फोकस करंतुनी कोन मोर मन नै कोन मन अछि से पार्ट रे फोकस करिवेनी आपण फोकस करिवे कि हां मु जेति की पढिया कथा सेति की पढ देली मु जेति की करि पारथानी सेति कर देली एबे जा हबो सेट पेपर रे देखिबी कोन क्वेश्चन आसीबो कोन नाही सेटा को कंटेम्पलेट एबे हमर करिया दरकार नै एंटीसिपेट करिया दरकार नै हां या हबो से हबो आपण जाई कि एग्जाम रे बसंतु आ गुटे जिंस कहबी एग्जाम रे कोन हुए ना बहुत क्वेश्चन एमते आसीबो जोटा आपण टोटली जानि नथिबे कि आपण कहबे अरे यार आर तो दीटा पॉइंट ऊपर बाहर ही नै आपण जदी यूपीएससी रो प्रीवियस क्वेश्चंस काढी कि जदी आपण देखुथिबे आ देखिए बहुत एमते क्वेश्चन अछि जहार कि आपनकर दि तीनटा पॉइंट रो अधिका बाहरिबो ही नै त से क्वेश्चन देई देथिबे 10 मार्कस रो 6-7 पॉइंट लिखियार अछि किंतु से क्वेश्चन 2-3 पॉइंट रो अधिका नाही माने पॉसिबल ही नै तार 2-3टा रो अधिका पॉइंट काढियार ठीक अछि सेमते क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबो आ सेमते क्वेश्चन जदि आपण अटेम्प्ट करिवे सेतबेले या भाबियनी यार मते आसुनी समस्या कर दउथिबे समस्या ठीक कर ना केही करि पार नथिबे केही करि पार नथिबे इन द सेंस मु खाली स्टूडेंट को कथा कहउनी कैंडिडेट्स को कथा कहउनी टीचर माने भी करि परिबेनी कारण जो जिंसर आंसर नाही सेते पॉइंट्स बाहरी परिबोनी सेमिते से जानि कि दियंती काहे कि दियंती टू टेस्ट यू से देखिए को ट्राई करंती कि इवन द एडवर्स सिचुएशन रे आपण केमती परफॉर्म करछन सेठ जदी जण कहबे यार मते आसुनी सेठ तार मोरल डाउन हे गला किंतु ता तळकु भाबंतु भलो सब इजी क्वेश्चन नॉट इजी एवरेज क्वेश्चंस अछि जोठी कि तमे भलो परफॉर्म करि पारथांत किंतु एठी तमे जो डिमोरलाइज हे गला सेथि पय कोन हबो तमरा आगो जो सब्सिक्वेंट जो क्वेश्चंस गुडा अछि से गुडा इंपैक्ट हबो तो जेतोले आपण लिखु जंती इवन दो आपण पॉइंट आसुनी दि तीनटा पॉइंट आसु दि तीनटा पॉइंट तो काढी देबे दि तीनटा पॉइंट आसुची टिके जागा छाडी कि नेक्स्ट क्वेश्चन को पळांतु डोंट डुएल ओवर द सेम क्वेश्चन जदि आपण गोटे मिनिट 1.5 मिनिट रे आउ मान तीनटा पॉइंट लिखि दैछन्ती आ गोटे मिनिट रे आपनकर आ किछि माइंड को आसुनी सेडा सेडी छाडी कि नेक्स्ट क्वेश्चन को पळांतु नेक्स्ट क्वेश्चन जाके अटेम्प्ट करंतु से क्वेश्चन विषय भाबंतु सेटा काहा को आसुनी कारण आपण भलो रे प्रिपेयर करि जाइछन्ती ठीक ठाक प्रिपेयर करि जाइछन्ती आसुनी से क्वेश्चन आइदर काहा को आसुनी कि मे बी से क्वेश्चन आपण एमती हेइ थाइ पारे कि से टॉपिक ता आपण पढिया भूले जानि परनांदी छाडी जाइछि किंतु ता माने नुहे कि आपनकर पूरा सेठी खराब हे गला आउरी पेपर अछि भाई गोटे क्वेश्चन खराब होला 19 टा क्वेश्चन बाकी अछि समसंगर सेमती किछि ना किछि कोड ना कोडी हबो ठीक अछि तो जेतले पेपर दउचंदी जेतले पेपर लिखुचंदी सेतले इवन दो आपनकर गोटे दिटा क्वेश्चन एपट सेपट हेइ जाउची डोंट बी डिसहार्टेंड आपण कोन ठीक अछि गोटे जाइछि आगु आ 19 टा अछि लिखि देबी आउ गोटे कथा आउ गोटे सजेशन देबी कि फर्स्ट ट्राई टू राइट द 20 मार्कर्स ठीक अछि फर्स्ट ट्राई टू राइट द 20 मार्कर्स माने आगुरु सॉरी लास्ट ईयर 20 आस्ते एथरो 15 आसीबो फर्स्ट ट्राई टू राइट द 15 मार्कर्स देन गो फॉर द 10 मार्कर्स मु काहे कहूजी पिला कोन करंती 10 मार्कर्स रे स्टार्टिंग रे पिला कोन करिवे बहुत अधिक अधिक लिखिया स्टार्ट कर दियंती ठीक बहुत अधिक अधिक लिखि देबे तापर कोन हबो जेतल 15 मार्कर्स को जिवे सेतल तांको पर टाइम शॉर्टेज हे जेते सेतल सन 15 मार्कर्स रे कम लिखिया स्टार्ट करिवे आ लास्ट को छाड़ देबे मु कहूजी डिफरेंस कोन हबो 10 मार्कर्स रे अधिक लिखि देले से माने 10 मार्क 6-7 रो अधिक काकू देबेनी भाबंतु आपण 6टा कि 7टा पॉइंट लिखि थांते सेतरे आपण को 6 मार्क मिल जाई थांते आपण कोन करले 9टा पॉइंट लिखि देले 9टा पॉइंट रे भी से आपण को 6 मार्क ही दउछन्ती किंतु आपण एटु कोन करले 2-3टा पॉइंट एक्स्ट्रा लिखिले टाइम वेस्ट करले तो जेतोले आपण 10टा क्वेश्चन 10 मार्क के सेति के लिखि सारथिबे आपण मे बी सेमति सब क्वेश्चन रे कि 5टा क्वेश्चन रे भी कला अलगु सेपटे आपणकर 15 मार्कस गोटे कि दीटा मिस हे गलानी तापर आपण कोन जिवे 15 मार्कस रे आपण 3 पेज लिखिया कथा माने इन जनरल नॉर्मल हैंड 3 पेज लिखिया कथा 15 मार्कस आपण कोन करे सेही टाइम को कंपनसेट करिया पई आपण कोन करिवे कम कम लिखिवे तो जोठी आपण को 6 रु अधिका मिलिबनी आपण सेठी अधिका लिखि कि सेति के मार्क आनले किन जोठी भाबंतु आपण को 15 मार्कस रे लेट्स से आपण को देई दी थांते 9 मार्क्स ठीक अछि किन आपण सेठी कम लिखि कि सेठी कोन करछन आपण 7 मार्क्स आनछन 2 मार्क सेठी छाडुछन
तो सेथिपे आपण कोन करिवे कि आगो 15 मार्क्स लिखिबे 15 मार्क्स लिखिदेबे 15 मार्क्स जदि आगो लिखिदेले ताहले कोन हबो कि जदि भी अधिका लिखुचंती डजंट मैटर कारण 15 मार्क्स रे आपण 3 पेज भरियर अछि तो आपण टिके अधिका लिखिदेले भी किछि प्रॉब्लम नै आपण को मार्क टिके अधिका मिलियो 7 रु 9 जाय आसीबो से मार्क आ 10 मार्क्स बेलू सेमिति भी टाइम कम थिबो आपण बहुत अधिका लिखि पारिबेनी बुझिले मु ई पॉइंट बुझिले मु लास्ट पॉइंट जो कहली एबे यस सर ओके तो एटा मो पटू किछि किछि टिप्स थिला जोटा कि आई थिंक यू शुड इम्प्लीमेंट इन द एग्जाम आउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जदि आउ किछि डाउट अछि आपण मनकर पचार दियंदु सर जमती यूपीएससी रे माने क्वेश्चन पारे माने किसी ब्लैंक पेज दे थांती किंतु ओपीएससी रे सेटा देबे बोल तो माने नै तो मे बी हाँ माने जमती पडला तो सेमती हमें को सीक्वेंस रे अटेंड करिपु क्वेश्चन माने एमती ओके सीक्वेंस वाइली जिबा दरकार ना जोटा आगो आस्तु सेटा ओके मु गोटे कथा कहूची कि ओपीएस रे एबे जाय तो से माने से प्रिंटेड क्वेश्चन रो फॉर्मेट एबे जे आसीनी माने जेमती यूपीएस रे आसे कि क्वेश्चन आस जाइतो तापर से माने 10 मार्क्स में 2 पेज दे दिथांते 15 मार्क्स में 3 पेज दे दिथांते सेमती एबे जे आसीनी तो एथरो जदी आनिबे सेटा अलगा कथा हबो ताले आपण कोउटा भी लेखंतु किन जदी भाबंतु सेमती आसीनी ताले मु कहबी कि हां एग्जैक्टली सीक्वेंस लिखिया दरकार नै किंतु एमिति भी करंतुनी फर्स्ट 1 लिखिले तापर 9 लिखिले तापर 18 लिखिचंदी तापर 3 लिखिचंदी तापर 6 लिखिचंदी तापर 12 लिखिचंदी तो सेमिति जे चेक करछि से भी इरिटेट हे जो आ मे भी एमती हेई पारे भाबंतु आपण 6 लिखिचंदी 12 लिखिचंदी तो सी कोन करछि 6 चेक करछि से 10 मार्क्स हिसाब रे देछि तापर मे भी 12 मार्क्स को भी 10 मार्क हिसाब रे भूल रे से मार्क दे देछि बुझ परछन मु कोन कहूछि मे भी सेमती हेई पारे जदि आपण बहुत सफल करिक लिखुचंदी तो मो हिसाब रे जदि आगो 15 मार्क्स लिखुचंदी तो मु कहबी आगो 15 मार्क्स सार दियंतु माने 11 टू 21 लिखि दियंतु तापरे आपण कोन करंतु 10 मार्क्स लिखंतु 1 टू 10 या फिर आपण कोन कर परिबे हां गोटे दिटा क्वेश्चन जदि आपण आसुनी आपण भाबुछन लास्ट लिखिबे तो कोन करिवे किंतु जनरली सीक्वेंस टा फॉलो करंतु कि 11 रु भाबंतु आपण 20 लिखुचंती आपण को 19 टा आसुनी आपण 19 टा सेट छाड़ देले ठीक अछि तापर कोन करिवे आपण जाई कि पूरा 1 रु 10 टा लिखि दियंतु लास्ट रे आसी कि आपण 19 टा लिखि दियंतु गोटे दिटा क्वेश्चन कले चलिबो किंतु मो हिसाब रे बहुत अधिका सफल कले एग्जामिनर भी कंफ्यूज हे जिवो आ से चिड़ी भी जिवो तो सेटा करिया कथा नै आपण भी कंफ्यूज हेबे जेतले आपण परीक्षा रे आपण भी बहुत सफल कर से बहुत अधिका टाइम न थाए राइट तो आपण कोन करछन भाबन 6 लिखिचंदी तापर 12 लिखुचंदी तापर 1 लिखुचंदी आपण निजे माइंड रे आपण भूली जइथिबे कि भाई मु को क्वेश्चन छाडी छी को क्वेश्चन रखी छी हां टिक मारुचंदी ये करछन से ठीक किन सही एपट सेपट करियर सेथिरे भी 4-5 मिनिट आपण को अधिका पळेबो तो मो हिसाब रे जेतले सीक्वेंस फॉलो करछंती ट्राई करंतु कि 15 मार्क आगो सार देबे तापर 10 मार्क गोटे दिटा क्वेश्चन एपट सेपट हे पियो एनीथिंग एल्स और का कुछ पचारे अछि ओके ठीक अछि ताले all the best to everyone I hope you all will make yourself and us proud we'll meet maybe we'll meet after we see your rank in the list even if something happens and you are not there still we will meet ठीक अछि okay then all the best everyone thank you I'm ending the class here आउ का किछ पचारे अछि ओके ठीक अछि थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू